अस्सलाम वालेकुम। हार्दिक स्वागत। टॉस का समय समय ग्लोबल डोडो टाइटंस वर्सेस अल समद क्रिकेट क्लब। ग्लोबल डोडो टाइटंस इम्तियाज लेफ्ट और वहीं पे अगर देखा जाए तो उनके अगेंस्ट जो टीम दूसरी, हालांकि समर अमीन आया है टॉस के लिए। अल समद वर्सेस ग्लोबल डोडो टाइटंस। अल समद क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। ये है न्यूज सेंटर से। द न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज दैट Al Samad Cricket Club have won the toss and decided to bat first. शानदार विजुअल्स। 15वां मुकाबला, खूबसूरत शानदार दृश्य। मात्र एक मुकाबला, यह 15वां लीग मुकाबला इस प्रतियोगिता का। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. तो ग्लोबल टर्डो टाइटंस वर्सेस अल समद क्रिकेट क्लब के बीच यह मुकाबला, जहां अल समद क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। जैसे ही खेल शुरू होगा, लाइव एक्शन में आपके साथ जुड़ जाएंगे कुछ क्षणों में।
Assalamu alaikum. Good evening and welcome to all important match of Global Dadoo Titans and Al Samad Cricket Club. We have the two teams in the middle, the two openers for Al Samad, on the other side Global Dadoo Titans. They need this one badly here. They need to win this one at any cost. It's a must-win game. It's important one and a pivotal one for Global Dadoo Titans. Otherwise, they are going to be under the pump. And take a look. These are the points table for you guys, and look at the different teams. United Imports, they are having 6 points out of 4 games. Hillview, they have 4 out of 4 games. The Real Sultan, they play 2 and they have 2 points. Then Al Samad, they play 2, they have 2 points. And Global Dadoo Titans, the only team that yet to open their account. Yashgag, 14 wickets. Roof 10. Sahil Shafi, 9 wickets. And Abid Mushtaq, 7 wickets. Look at Sahil Shafi, the top contender in the tournament. He's having runs, he's having wickets. What a year he's having here. And what a session. 215 runs, 146 to Banu, 125 to Tajamul Baba, the Sixer King, 125 to Nasir Kumar. These are the leading run scorers in the tournament. And look at, these are the highlights from JK Super Cement Red Premier League Season 2. And look at that orange cap. Orange cap. It is none other than Sahil Shafi. He has picked up 7 wickets and scored 215 runs. The only centurion in the tournament and the one who got quickly to his 50. Take a look. Al Samad Cricket Club captain Hilal Khalad, Adil Gultan, Amir Lefty, Mohit Kanoja, Samar, Aman Alvi, Ishtiyaq Ilai, Robbie, Shahid Khan, Bilal Pandya, Harshado and Sunil Kumar. Pandya gets the game in today's encounter. And taking a look of the Global Dadoo Titans, Imtiaz Lefty, the skipper Atharwa Khaled, Dardish Goni, Gawar Rashid, Sarshil, Wasim Raza, Irfan Mir, Salim Mir, Samir Bell, Adil Dada and Ismail. Umar Malik, who was the captain of Global Dadoo Titans, he is injured today. So in place of Umar Malik, there is Ismail added to the fold, I think. Ismail gets his game and he comes in place of Umar Malik. But Umar Malik played some of the cracking shots at the game. And in the end, it was Global Dadoo Titans once again falling short. But Umar Malik played his part. He played that pivotal part to great extent in that game. It's a wonderful evening here at Bakshi Stadium. Match number 15. And we have the two big teams fighting it out. But Global Dadoo Titans left with no other option. They have to win this one at any cost. As Hillview Rajouri, they have now 4 points under their belt. Imtiaz Lefty to open the attack. Wicketkeeper up to the stumps as we watch Imtiaz to open the attack. On strike is going to be Hilal Khalad down the leg side. Bad line punished. Runs 4 of them and Hilal Khalad is off the mark. Straight away. Bad line. Hit me delivery. So does the batter. Hits it away. Puts it away. He's off the mark with a boundary. It's Al Samad 4 for none in over number 1. अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत। 15वां मुकाबला ग्लोबल डैडू टाइटंस बनाम अल समद क्रिकेट क्लब। हालांकि अल समद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। टीम के कप्तान उमर मलिक आज इंजरी के कारण टीम का हिस्सा नहीं है। हर एक जरूर उनके सामने उनकी अनुपस्थिति में चुनौती जरूर होगी। कलर्ड ने चौका लगाया है पहली गेंद पर। इम्तियाज लेफ्टी के 4 बगैर नुकसान के इस बार ऑफ स्टंप पर। हालांकि अच्छा स्ट्रोक था पर सीधे फील्डर के पास उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड कर लिया। रन की कोई संभावना नहीं। तो 4 रन। और जिक्र कर रहे थे अल समद की अगर हम बात करें, और वहीं पे ग्लोबल डैडू टाइटंस हालांकि 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यहाँ अवश्य जीत तलाशनी होगी ग्लोबल डैडू टाइटंस को। कलर्ड सामने 4 पे, 4 बगैर नुकसान के अल समद। एक बार फिर इस बार उड़ाया, कोई भी मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास और गेंद सीधे बॉर्डर लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। एक चौका और अब एक छक्का। और कलर्ड की यही क्षमता है, उनकी यही शैली है, वो इसी शैली से बल्लेबाजी करना जानते हैं और शुरुआत में अटैकिंग क्रिकेट खेलना जानते हैं, क्योंकि जानते हैं पावर प्ले है और यहाँ अतिरिक्त दबाव बनाना होगा। शुरुआती ओवर्स में आप एक अच्छी शुरुआत देंगे अपनी टीम को तो आप बड़ा लक्ष्य खड़ा कर सकते हैं। फिलहाल 2 प्रारंभिक बल्लेबाज इश्तियाक, रॉबी और उनके साथ
हिलाल कलर्ड प्रारी का प्रारंभ करने आए हैं 10 रन बगैर नुकसान के। थोड़ा आत्मविश्वास के साथ फिर ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी, हालांकि वहां प्रयास जरूर था। और आदिल दादा संभवतः ग्लोबल डैडू टाइटंस की टीम का हिस्सा है आज। और निश्चित तौर पे एक बेहतर ये कैच हो सकता था अगर यहाँ प्रयास सफल हो जाता। और कहीं ना कहीं उनका चयन किया गया है टीम में। आदिल दादा पिछले मुकाबले की अगर हम बात करें, और हिलाल कलर्ड 10 रन बनाया है पिछले मुकाबले में, उस प्रकार का प्रदर्शन रहा नहीं। पर यहाँ अगर अलसमद की बात करें, वो एक मुकाबला जीते हैं इससे पूर्व, क्योंकि 2 मुकाबले खेले हैं, एक में जीत एक में हार। उनका तीसरा मुकाबला, ग्लोबल डैडू का तीसरा मुकाबला, पर पिछले दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। अवश्य जीत की तलाश। 15वां मुकाबला जे के सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। और यहाँ वो कॉन्फिडेंस दिखाना होगा कलर्ड और इश्तियाक इलाही को। अच्छी गेंद थी, इस बार अंदर लेकर के आए, पटने के बाद अंदर की तरफ आती हुई। और जानते हैं कलर्ड और उनके साथी इश्तियाक इलाही, क्योंकि इश्तियाक ने पिछले मुकाबले में एक बेहतरीन पारी खेली थी, वो विस्फोटक पारी खेली थी। और क्या लाजवाब प्रदर्शन रहा था उस अकेले दम पे, उन्होंने वो शानदार प्रदर्शन किया था, अर्धशतकीय पारी। फिलहाल कलर्ड सामने ऑन साइड में गई है गेंद, पर फील्डर जरूर तैनात। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, और ऐसे में ओवर की भी समाप्ति। पहला ओवर समाप्त। अल समद क्रिकेट क्लब 10 बगैर नुकसान के। Global Dadoo Titans made one change because of that injured captain. They brought in Adil Dada. There was an opportunity gone down. It's 10 for none after the completion of over number 1. Ishtiaq Robbie, the hero of the other game, he is here. Can he carry on where he left in the last game? He scored some quick runs, and it was that knock and that majestic approach in that game that won him the player of the match title and the award. And later on his team got 2 invaluable points from that match. It's 10 for none after the completion of over number 1. We are going to be in over number 2. Samir Bell to operate. Is he going to ring the bell in today's game? Let's find it out. Only the time will tell us. At the moment Samir is warming up a bit. He's getting ready to operate from Southern Pavilion End, and this is iconic and a beautiful Bakshi Stadium for you guys, hosting a Red Premier League Season 2. And the title sponsor JK Super Cement, presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. We are back with match number 15, and it is the second we are going to be in. Samir Bell to operate. On strike is going to be Ishtiaq Robbie, Ishtiaq Ilai, the tall lanky batter, and the lad. He's going to face the likes of Samir. What Samir is going to do, how he's going to operate. Is he going to weave the magic and web around the batter straight away? Let's find it out. Which way Ishtiaq Robbie is going to go? Is he going to stick to basics, or is he going to launch straight away in very first over, which he's going to face from Samir Bell? On the other side, Hilal Colored scoring invaluable 10 runs on to 10 of 6. Here is the second over, ball 1. Worked away nicely, straight down the ground, down towards long on. He's up the mark, call is for 2, could be tight, but decided against that second run in the end. Good call. It's 11 without loss as we are in over number 2. Samir Bell, he's got the ball in his hand. He's got that experience. Only thing remains to be seen how he's going to operate in today's game, because the 2 batters in the middle, they believe in attacking cricket. 11 बगैर नुकसान के 1.1 ओवर की गेंदबाजी समीर बेल का अब इस्तेमाल किया गया है गेंदबाजी में। पर इश्तियाक रॉबी और कलर्ड की बात करें, दोनों अटैकिंग क्रिकेटर हैं, बेहतरीन और बुद्धिमानी क्रिकेटर। जहां तक अल समद का सवाल है, कलर्ड सामने 10 पे 11। 1.1 के बाद एक विकेट की तलाश होगी शुरुआत में, पर कलर्ड अपनी उस शैली के अनुरूप बल्लेबाजी करेंगे। वसीम रजा तैनात हैं, सिंगल मिल जाएगा वहां पर। दूसरे की मांग थी, पर वापस लौटना पड़ा सुरक्षित इश्तियाक रॉबी को, क्योंकि यहाँ उतनी ज़्यादा आक्रामक शैली से बल्लेबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी अभी शुरुआत हुई है मुकाबले की। और ऐसे में ग्लोबल डैडू टाइटंस की टीम को आज बेहतर प्रदर्शन करना होगा, एक शानदार क्रिकेट खेलनी होगी, पहली जीत की तलाश है। क्योंकि अगर आज वो मुकाबला हारे तो फिर काफ़ी कठिन परिस्थितियाँ आने वाले समय में उनके लिए ज़रूर होंगी। 2 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, ये तीसरा मुकाबला है। एक बार फिर वसीम रजा बहुत ही बेहतरीन फील्डर हैं, सिंगल मिल जाएगा, 1 रन और खाते में जुड़ा, और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि। यह रन संख्या पहुंच गई है अब जाकर के 13 पे। 1.3 के बाद कलर्ड 11 पे, 7 गेंदों से इश्तियाक इलाही 2 पे सामने कलर्ड।
जिन्होंने अब तक 11 रन बनाए हैं 7 गेंदों से। एक अच्छा क्रिकेट, एक बेहतर क्रिकेट चाहिए यहाँ से इन दो बल्लेबाजों को। और यहाँ पे भाग्य ने साथ दिया, अंदरूनी भाग लगा बल्ले का और गेंद स्टंप से जा नहीं टकराई, क्योंकि अंदरूनी भाग लेने के बाद स्टंप्स के बिल्कुल पास से होती हुई ऑफ साइड में चले गई थी बगैर किसी रन के। 13 1.4 के बाद समीर बैल अच्छा ओवर, 4 गेंदों से 3 सिंगल आए हैं और पिछली गेंद पर मुश्किल बचे जरूर थे कलर्ड। यहाँ सामने की ओर मिड ऑफ तैनात है, मिड ऑफ तैनात जरूर है, उनसे गेंद छिटकी और जब तक बैकअप पे वसीम रजा और काफी लंबा सफर तय करना पड़ा। वो लॉन्ग ऑन क्षेत्र से आकर के इस क्षेत्र पे आकर के गेंद को फील्ड किया वसीम रजा, बेहतरीन फील्डर हैं। अरे एक सिंगल जरूर मिलता हुआ कलर्ड और इश्तियाक रॉबी को। अल समद की टीम अब 14 तक समझौते 15 पर पहुंच चुकी है। 1.5 ओवर की गेंदबाजी, रन संख्या इस समय 15, बगैर नुकसान के आखिरी गेंद कलर्ड के लिए। 13 पे 9 गेंदों से कलर्ड और समीर बैल आखिरी ओवर है उनका। अच्छा स्ट्रोक, गैप में गई है गेंद, सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए ये चौका मिलता हुआ यहां पर टीम को और 4 और खाते में। इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि। समीर बैल के ऑफ स्टंप पे ये गेंद थी, खूबसूरती के साथ इस गेंद को निकाला गैप में और 4 रन बटोर लिया अपने लिए, अपनी टीम के लिए। 4 और खाते में, 4 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि। 2 ओवर की समाप्ति शुरुआत आज हिलाल कलर और इश्तियाक रसूल ने की है। कुल रन संख्या 2 ओवर में 19। अच्छा क्रिकेट खेले हैं। दिन रात्रि का यह मुकाबला है। 19 रन बने हैं 2 ओवर की गेंदबाजी में। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। 2 के बाद 19 समीर बैल के पहले ओवर से आए 9, कलर्ड ने 17, इश्तियाक इलाही ने 2 रन बनाए हैं। और नेवर की शुरुआत पारी का तीसरा ओवर। तीसरे ओवर में देखना होगा क्या गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा। हालांकि वसीम रजा अभ्यास कर रहे हैं तो एक और परिवर्तन या तीसरे गेंदबाज का चयन। जानते हैं इस विकेट पे इश्तियाक रॉबी और हिलाल कलर्ड जो एक बार सेट हो गए तो फिर मुश्किल की चुनौती हो सकती है। उन्नीस 2 ओवर की गेंदबाजी के बाद वसीम रजा का चयन किया गया है। पहली गेंद रजा के लेग स्टंप पर उड़ा दिया, हवाई यात्रा पे गेंद सीधे और स्टेडियम से बाहर, छक्का कलर्ड के बल्ले से निकलता हुआ। और इस छक्का संभवतः क्षमा कीजिएगा इश्तियाक रॉबी के बल्ले से ये छक्का। जी हाँ, इश्तियाक रॉबी सामने थे और रजा का स्वागत किया पहली गेंद पर। लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी, एक आक्रामक शैली के बल्लेबाज, और उनके सामने आप छोटी गेंद ना करें तो बेहतर होगा। 25 बगैर नुकसान के। इस बार स्टंप्स को कवर किया, गेंद की पिच तक पहुंचते हुए सामने की ओर खेला, 1 रन पूरा कर लिया और 1 रन और रॉबी और हिलाल कलर्ड 2 विस्फोटक बल्लेबाज है। अलसमद की टीम चाहेगी कि ठोस शुरुआत मिले, वो मजबूत आधारशिला प्रदान करें ये 2 बल्लेबाज। पहले 6 ओवर्स में अगर आप 60 रन 50-60 रन जोड़ लेते हैं तो फिर आप एक अच्छा लक्ष्य खड़ा कर सकते हैं यहाँ ग्लोबल डाडू टाइटंस के विरुद्ध। और एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक, अरे काफी रन मिलेंगे, ये 6 और मिल जाएंगे। ये दूसरा छक्का इस ओवर में। पहले इश्तियाक रॉबी और अब हिलाल कलर्ड ने भी ज्वाइन किया उनको इस छक्के के साथ। रजा के विरुद्ध ये दूसरा छक्का आसान रहता नहीं है, पर विकेट बहुत बढ़िया है। ठीक जो उपेक्षा कर रहे थे बल्लेबाज हिलाल कलर्ड, इस उछाल पे गेंद आएगी और बिल्कुल वही उछाल मिला, उनकी रेंज में गेंद थी और 6 रनों के लिए उड़ा दिया। एक बार फिर फील्डर ने प्रयास किया, वो असफल रहा, पर गेंद सफल रही मैदान से बाहर जाने में। एक और छक्का, ये तीसरा छक्का इस ओवर में रनों के बरसात। It's raining sixes here at Bakshi Stadium. Take a look again. This is Hilal Khaled for you. He believes in attack. He's a staunch believer of attacking cricket. He's going to attack. Here is Raza again. Under pump. This time gets beaten on that occasion. It's 38 for none. This we have seen 3 sixes coming and a solitary single. First 6 coming off the bat of Ishtiaq Ilai. Then he asked his partner Hilal Khaled to take this legacy forward and keep going, keep doing it in your own style. He's playing his own brand of cricket as far as Hilal is concerned. The next one, that one straight over the ball set. 2 men in pursuit. Will he get to the ball? Are they going to get to the ball? No way. Ball is going to win the race. That's 4 again.
It's 42 for none after the completion of over number 3. Wasim Raza, talented lad in his very first over. He's gone for plenty. 3 sixes and a boundary. And added to add to it one more single. I mean, it's kind of an assault straight away. And we can also say that it's adding salt to an injury. And he's wounded at the moment. 23 of his very first over. And overall, it's 42 for none after the completion of 3 overs. In place of Umar Malik, they brought in Adil Dada in today's game. That is the replacement of Umar Malik, the captain, the skipper of Global Dadoo Titans. And he's going to miss out on today's occasion. Well, it's down to now Adil Dada. He's in place of Umar Malik in today's game. There is a message from dugout for Hilal Coloured, as Coloured is going to attack the ball. He's going to go after each and every ball. We have seen that, and take a look again how the ball gone into the night sky and onto the rooftop. That was an expensive over from Wasim Raza. 23 of that over, massive over. Carnage continues here at the stadium, here at the center. And you are still going through these wonderful shots. Elegance was there. Flawless and fearless. The important thing about the two batters, they're attacking the bowlers without any fear. तेज तरार शुरुआत, आक्रामक शुरुआत कलर्ड और रॉबी की। हालांकि कलर्ड 33 पे 14 गेंदों से, इश्तियाक रॉबी 9 पे। समीर बैल एक और ओवर लेकर के चौथा ओवर। 3 ओवर में 42 बने हैं, 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से। आक्रमण जरूर किया है। आपके जो प्रमुख हथियार है, जो आपके मेन वेपन है, जो एक बेहतरीन गेंदबाज है वसीम रज़ा, उनके विरुद्ध अटैक किया शुरुआत में ही हिलाल कलर्ड ने। और कहीं ना कहीं उनकी लाइन और लेंथ को बिगाड़ने का जो वो प्रयास था, उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिली। पर वसीम रज़ा एक बेहतरीन गेंदबाज है, बेहतर वापसी कर सकते हैं। ये क्रिकेट है, महान अनिश्चितताओं का खेल है। आपका दिन नहीं तो सब कुछ आपके विपरीत हो जाता है, और वही चीज़ें हुई पहले ओवर में। कलर्ड द्वारा वसीम रज़ा के विरुद्ध। इस बार फिर हवा में गेंद, फील्डर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए एक और चौका मिलता हुआ यहाँ पर। 4 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि। उछलता कूदता छलांगे मारता हुआ ये स्कोर इस समय पहुंच चुका है संभवतः 46 पे। मात्र चौथे ओवर की गेंदबाजी, 46 रन अभी तक बने हैं। और क्या शानदार और बेहतरीन बल्लेबाजी। आक्रमण इस समय बीच मैदान में चलता हुआ, यहाँ वापसी करनी होगी। एक विकेट की तलाश। 47, 3.2 के बाद पहली गेंद पर सिंगल, फिर चौका। और इस समय 37 पे कलर्ड सामने। इस बार फिर हवा में गई है गेंद, और उस ओर खिलाड़ी तैनात जरूर है। एक सिंगल मिल जाएगा, पलट कर दूसरे रन के लिए तेजी करनी होगी, और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। 2 और 49। चौथे ओवर की गेंदबाजी। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल। अथवास with confidence. अल समद बनाम ग्लोबल डडू टाइटंस के बीच ये मुकाबला। एक बार फिर ये गेंद हवा में गई है, सीधे वहां पर विकेट कीपर के दस्ताने में। टॉप एज लगा, हवा में उछली, आसान सा कैच। कलर्ड की पारी समाप्त। 39 बनाए, 17 गेंदों का सामना किया। 49 पे पहला विकेट चौथे ओवर में गंवाया, जहां अल समद क्रिकेट क्लब की टीम ने। तो पहले विकेट की तलाश थी, लगातार आक्रामक शैली से बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बार गति परिवर्तन किया, चकमा दिया कलर को। पहले से स्ट्रोक के लिए कमिट हो गए थे, और ऐसे में ये गेंद हालांकि टॉप पे लगा और हवा में उछली जरूर। सीधे वहां पर विकेट कीपर ने, सरशील अब्बास ने एक आसान सा कैच लगा, और इस तरीके से एक विकेट की तलाश थी, वो विकेट मिलता हुआ। पहला विकेट यहां पर अल समद ने गंवाया है कलर्ड के रूप में। 39 रनों की एक बेहतरीन पारी, तेज तरार विस्फोटक पारी खेली। इश्तियाक इलाही 10 पे 5 गेंदों से 49 पे 1, 3.4 के बाद। और बैल को मिलने वाली ये पहली सफलता अपने 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 16 रन दे करके। Coloured is gone, playing that cameo of 39 from just 17 balls. Setting things ablaze here, lit up center. 1 for 49. Little attendance here. They enjoyed that cracking knock, and it was absolute gorgeous. The way he was going after the bowlers, it was fearless. It was flawless from Hilal Coloured. He's sandpacking. Last love for Sameer Bell in the end. He removed Hilal Coloured. And Coloured back to heart. That brings Adil Guldan. Adil comes in at number 3. How he's going to bat in today's game? There is going to be huge amount of pressure on Adil. He has to perform in today's match. Look, there is already one change in the lineup. You can see that.
In place of Umar Malik, Adil Dada comes in. He finds his place in the playing 11. It remains to be seen how he's going to bat in today's match. One more opportunity for Guldan to prove his mettle. 49 for 1. Sorry, correction comes in. I was talking about Global Dadoo Titans. There we saw the change in form of Umar Malik goes out and Adil Dada comes in. Talking about this man, Adil Guldan. He has to prove his mettle because he failed over the past couple of days. They played 2 games and it were tough for this lad. He was unable to operate. He's known for some of the cracking shots. He's known for hitting the ball hard, but he failed to do that in other 2 games. But today it's a new game. It's a fresh one underway. That's the 15th match of tournament. That one, there is a shot for LBW. There is a shot for LBW and it's turned down. Ishtiaq Ilai, Robbie gets away with that one. Lucky, survives care. 4 gone. It's 50 for the loss of 1. In no time, it races up to 50 at the cost of 1. The man who scored invaluable 39 is sent back to pavilion. Take a look again. Was that close? I think it was clearly going down leg. There was something that saved the batter. It was drifting bit down the leg side. And deep thinking and deep thought from Samir Bell there. After thinking over it and decided to walk away. 50 for 1 after 4. 5th over is about to start. This is JK Super Cement Red Premier League presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. Match number 15. Good to see. A game is going at its best on its way. And we're into the 15th one. It's day number 9 of second season as far as RPL Red Premier League is concerned. And here we have that sheet where it is displayed that the title sponsors of the tournament, JK Super Cement, presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. Guldan to face the fresh over. Ismail Mohtesh will bowl. What a name he's got. First ball of fresh over. 50 on the board. It's already 50 on the board. Dead ball signaled. We are in over number 5. Packed offside. Plenty of fielders on offside. It's a kind of a jail for the batter. Is he going to break free? That remains to be seen. That is going to be interesting. Beaten on that occasion by that flight from Ismail. Perfect one to start with. There was a little flight and offer. Guldan shaping for the defensive shot and is beaten completely. The 2 batters scamper through for a bye. 51 on the board at the cost of a wicket. Ishtiaq Robbie to face the next one. Robbie on to 10 of 6 balls. Will he carry on with the same pace? That one, it was a full toss delivery. Misread that one completely. Should have been in the stands. He's kicking himself there. He knows that should have been somewhere in the stands on onside. And he lost the sight of the ball all of a sudden. A funny moments in the middle. He was trying to flight it. Once again, flight and off a low full toss again. Robbie is again unable to unleash. Find his man at mid-on. There is Salim. Just a single. 52 for 1. The 2 batters in the middle. Both know how to go hard at everything. What remains to be seen is how Robbie will play and how Adil Guldan will accompany and support the lad who's on to 11 of 8. And Guldan is on to 1 of 2 balls. This time Guldan goes hard at it in the gap on offside. Down towards that point area. Can't stop the ball. Ball is going to win the race. And he believes in that pace and attack. The 2 batters in the middle, they believe in their power. They believe in their energy. They're going to energize. Take a look again. Look, dig out nicely. It was flight and over again, but he takes the full control of that. He takes him on. He decided to go at it. There is no look back. They need runs here. They're trying to put pressure on the bowling unit. Putting bowler under the huge amount of pump and pressure. The next one, dig out nicely again. A kind of that helicopter shot comes into play. One more run taken. It's 57 for 1 into the 5th over. Ismail in his very first over, he was trying to put pressure on the batter. Trying to weave that magic and the web around the batter. Trying to trap him. And he answered him equally. 57 पे 1.4 और आदिल गुलडान जब से आए हैं हर प्रहार वो जरूर कर रहे हैं पर सफलता अभी तक मिली नहीं है। 6 पेरे बाद है 4 गेंदों से रॉबी, 11 पे 8 गेंदों से इस्माइल।
आज उनका चयन हुआ है, वो गेंदबाजी कर रहे हैं रॉबी के लिए और सीधे वहां पर हाथ में और कैच छोटा इरफान मीर से। तेज स्ट्रोक जरूर था पर सीधे वहां पर हाथ में जा लगी थी गेंद, पर इस कैच को लपकना जरूरी था, वो भी रॉबी का विकेट। और यह हाथ में आने के बाद छिटके और उनसे शरीर से जा टकराई, उनके शरीर से जा टकराई, जमीन पे जा गिरे। ऐसे में कुल मिलाकर कहना चाहिए कि एक जीवन दान मिलता हुआ यहां पर बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 5 समाप्त 58 पे 1। आदिल गुलडान 6, 4 गेंदों से इश्तियाक रॉबी 12 पे। ग्लोबल डडू टाइटंस की टीम जो कि इस समय गेंदबाजी कर रही है, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया यहां अलसमद क्रिकेट क्लब ने। अलसमद ने 2 में से 1 मुकाबला जीता है, 2 अंक उनके हैं, और ग्लोबल डडू टाइटंस ने दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में वो पिछला मुकाबला सुपर ओवर में उनके विरुद्ध यूनाइटेड इंपोर्ट नगर ने जीता था। आज जीत अवश्य है यहां से 2 अंक, और वहीं पे अलसमद अगर ये मुकाबला जीत जाती है तो फिर 4 अंक के साथ वो और भी अपने स्थान को पक्का करने में सक्षम हो जाएंगे। और कोशिश होगी, 1 विकेट जरूर मिला है, अच्छा क्रिकेट देखने को मिले। 5 के बाद 58। और पिछले ओवर में 7 रन आए थे समीर बैल। पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक, पीछे फील्डर तैनात हैं पर 2 रन जरूर मिल जाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। रॉबी काफी तेज दौड़ लगाते हैं, बहुत ही बेहतरीन है वो बल्लेबाजी की अगर बात करें। इश्तियाक रॉबी 14 पे सामने 61 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर पारे का। बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला, क्योंकि एक तरफ 2 अंक की तलाश, अपनी पहली जीत की तलाश ग्लोबल डडू टाइटन जीडी टाइटंस को, और वहीं पे 2 अंक लेकर के तीसरे मैच से 4 अंक सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए, और इस पूल में 4 अंक लेने के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रयास रहेगा, कोशिश जरूर रहेगी अलसमद क्रिकेट क्लब की। तो ऐसे में ये एक अच्छा मुकाबला जरूर देखने को मिल सकता है। रॉबी और हिलाल कलर्ड ने शुरुआत की थी बल्लेबाजी में, पर कलर्ड ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 39 तक वो पारी सीमित रहे, 39 पे जाकर के उनका विकेट मिला समीर बैल को। अपना तीसरा ओवर 19 रन देकर के 1 विकेट, मात्र 1 विकेट हाथ लगे है। यह रॉबी का कनेक्शन है, ये सीधे स्टैंड्स में जाएगी। बड़ा स्ट्रोक रॉबी के बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर, 6 और खाते में। इश्तियाक रॉबी क्या बेहतरीन बल्लेबाज हैं, निडर होकर के क्रिकेट खेलते हैं, अब किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है उन पर। खूबसूरती के साथ गेंद को सीधे स्टैंड्स में जा पहुंचा समीर बैल के विरुद्ध, और इस छक्के के साथ रन संख्या अब अलसमद क्रिकेट क्लब की 66, 1 विकेट पे 5.2। एक बार फिर उड़ाया है, क्या इस बार 4 मिलेंगे अथवा 6? फील्डर उस ओर जा रहे हैं, और यहां एक बार फिर 6 मिलेंगे। इस बार वो सामने बड़ी स्क्रीन, वहां पे गेंद जा लगी है, और एक और छक्का। 2 गेंदों से 2 छक्के। हमने जिक्र किया था कि पहले 6 ओवर में अगर आप 50-60 रन जोड़ ले तो आप बड़ा लक्ष्य खड़ा कर सकते हैं, पर यहां रन संख्या की अगर बात करी जाए तो इस समय जो रन संख्या वो 72 तक पहुंच चुके हैं, 72, 1 विकेट पे। अब मात्र 5.3 ओवर की गेंदबाजी, क्योंकि अभी भी 3 के दुकान बाकी, 262 प्रोजेक्टेड स्कोर। हालांकि क्रिकेट महान जनताओं का खेल है, पहले सत्र में यहाँ पर अच्छे खासे रन बने हैं, दूसरे सत्र में हमने पिछले मुकाबले में देखा कि उतने ज्यादा रन बने नहीं है दूसरे सत्र में, पर इस समय 13.09 प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है टीम अलसमद क्रिकेट क्लब। 72 पे 1, 5.3। 15वां मुकाबला जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। 72 पे 1, और वो कॉन्फिडेंस दिखा है रॉबी में। एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे, जगह बना करके 1 रन वहां पर हल्का सा फंबल हुआ। मिसफील्ड आज काफी ज्यादा देखने को मिली है डडू द्वारा, और दबाव भी है शुरुआत में आक्रमण करने का। जो हिलाल कलर ने शुरुआती ओवर से ही एक दबाव बनाने का प्रयास किया था, वो आक्रमण किया था, वो विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी की थी। यहाँ बिल्कुल भी गेंद को सफाई के साथ फील्ड नहीं कर पाए। रन जरूर मिले यहाँ पर, 2 और खाते में, 2 छक्के और 2 बार 2 रन मिले हैं, तो कुल मिलाकर 16 रन आ चुके हैं। यहाँ 1 रन और आएगा, ये 17 रन अभी तक आ चुके हैं इस 5 गेंद से। 75 पे 1, 5.5 ओवर की गेंदबाजी। आखिरी गेंद का आना बाकी, 2 6 8 6 14 2 16 और 1 17 रन इस ओवर में समीर बैल के। आखिरी गेंद का आना बाकी, गुलडान सामने 6 पे 29 इश्तियाक रॉबी ने बनाए हैं।
गुलडान ने सम्मान दिया, अच्छी रणनीति, क्योंकि जानते हैं एक छोर से रॉबी अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि रॉबी लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, सेट हैं और गेंद को ठीक तरीके से मिडल कर रहे हैं, तो फिर आवश्यकता नहीं है दोनों छोर से आक्रामक होने की। फिलहाल 6 ओवर की समाप्ति 76 पे 1 अलसमत क्रिकेट क्लब। No improvement shown by the bowlers. And the two batters are cashing on at the moment. It's 76 after 6 overs. Carnage continues in the middle. Hilal colored left. Robbie takes the responsibility, moves to 29. Hilal scoring 39 invaluable. He's got Adil Guldan on the other side, who's on 7 of 5 balls. Bowlers need to change their line and length a bit. They need to keep it away from the batter's arc. That isn't going their way at the moment. Nothing is going their way. And to be precise or preciser, nothing is working at the moment. They're coming with pitch ones. At times we've seen hop trackers coming into play. Easy pickings for Bandipura based Ishtiaq Elahi, famously known as Robbie. Over number 7. The field well spread out for Ismail. Fresh over first ball, and Guldan gives it wings, makes it fly. There it goes, out of the center for a maximum. What a shot to start with. Ismail begins the fresh over, and Guldan with that sweep shot. It flies into the sky and out of here. Look, we need a new ball in play now. It is going to be the call for fourth umpire, and he's going to walk in with briefcase which is filled with balls. It's 82 for 1. We're into the 7th or the very first ball of the fresh over. Attack continues. They're terrorizing the bowlers here. We're into the 7th over, and the first ball flies, gone the distance, 82 for 1. 82 पे 1.6 पहली गेंद पर छक्का, वो खूबसूरत स्वीप आदिल गुल्डान के बल्ले से 13 पर पहुंच गए 6 गेंदों से। रॉबी ने भी 29 रन बनाए हैं अभी तक। ये तेज शुरुआत, ये तेज आक्रमण पर अंकुश लगाने की आवश्यकता। उपाय आपके पास विकेट लेने का, और वो विकेट लेना होगा यहां से, फिर जाकर के इस रनगति पे अंकुश लगाया जा सकता है संभवतः, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों की अगर बात करें तो आपके पास एक अच्छी खासी बल्लेबाजी है। अलसबत की अगर हम बात करें, 82 एक विकेट पे 7वें ओवर की गेंदबाजी। इस्माइल का ये दूसरा ओवर, 1.1 ओवर 13 रन, पहले ओवर में 7, इस गेंद पर, इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का। अगली गेंद लेकर के तैयार गुल्डान सामने। 13 पे अल समद क्रिकेट क्लब 82, मात्र 1 विकेट अभी तक खोया है गुल्डान के लिए। इस बार फ्लाइट देने का प्रयास था, फ्लाइट हिट गेंद जरूर थी, फिर उसी प्रकार के स्ट्रोक की आवश्यकता थी, बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे, पर इस बार संपर्क नहीं हुआ और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। आक्रमण कर रहे हैं गुल्डान भी अब, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ रनगति को उछालना है। फिर रिवर्स स्वीप का प्रयास किया था, पर एक बार फिर सफलता नहीं मिली, और गुल्डान जो कि पिछले कुछ मुकाबलों से खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे में आवश्यकता नहीं है इस प्रकार के स्ट्रोक की, पर उनके जो तेवर हैं वो कुछ अलग प्रकार के हैं, उनकी मानसिकता कुछ अलग प्रकार की है। यहाँ फिर हवा में, पर सेफ स्ट्रोक है, क्योंकि खिलाड़ी काफ़ी पीछे हैं। जब तक इरफान मीर गेंद को आकर के फील्ड करते, और इरफान ने पिछले मुकाबले में एक अच्छी पारी खेली थी, हालांकि एक उस पारी को एक बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, पर जो शानदार उनका व्यवहार दिखा था, वो आत्मविश्वास दिखा था उनकी बल्लेबाजी में, वो कमाल का था। और कहीं ना कहीं आज भी उस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता ग्लोबल डोडो टाइटंस के लिए। 83 पे 6.4 ओवर, 7वां ओवर। इस्माइल 7 रन अभी तक इस ओवर से आए हैं। यह सम्मान दिया इश्तियाक रॉबी, जो कि 29 पे हैं, और जानते हैं विकेट का महत्व, इस मुकाबले का महत्व। बड़े आत्मविश्वास के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की है, निडर होकर के उन्होंने आज बल्लेबाजी की है इस मैच में। यहाँ फिर एक बार फिर हवा में गेंद पर फील्डर तैनात हैं, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते 1 रन और खाते में। अच्छी बल्लेबाजी, पर जूझ रहे हैं गेंदबाज 1 विकेट के लिए, क्योंकि 1 विकेट हिलाल कलर्ड का मिल चुका है, पर दूसरे की तलाश यहाँ पे। 7 समाप्त 84 पे 1। गुल्डान 14, इश्तियाक इलाही 30, 16 के दोस्त।
What a batsmanship displayed by two batters in the middle. No stopping, no look back, going after each and every ball in style here. 84 for 1, 7 overs gone, 8th over is about to start. Pressure is mounting and counting on Global Dadoo Titans. They need a win here to walk away and stay alive in the competition. Looks like, is it going to be Gawar Rashid or is it going to be Imtiaz Lefty? Lefty is designing the field at the moment. He's taking a quick look of the field and it's going to be spin into the attack from Southern Pavilion end. Looks like as Wasim Raza is warming up a bit. He's going to measure that run up. Yes, of course. He goes to Raza here. And captain knows that he needs someone who can pick up a wicket here. They need one badly at the moment. As that bat speed, the flow of runs, it is just like that reverse, never go reverse. They're looking forward and going after everything. Whatever coming batter's way, they are trying to dispatch it with full power and authority. 84 for 1. Over number 8. Raza has got the ball. First over gone for 23. Expensive. And is brought back for the second spell. And this could be wicket number 2. It is indeed. Ball holding up a bit. Robbie can't believe. Got to go. Some respite. Something to celebrate and cheer for. Global Dadoo Titans. Carnage continued for 7 overs. Now there is Raza who picked up that important wicket. Much needed breakthrough. And with that follow wicket, it's 80 for 2. Benjamin departs. Ishtiaq Robbie is walking back to pavilion. He trudges back to hut. It's wicket number 2 down. Important one to go. Look, ball is holding up a bit again. But you need those skills. How to take that pace off and make the ball go slowly towards batter. चकमा यहाँ खा गए इश्तियाक रॉबी और रजा को सफलता, हालांकि पिछला ओवर उनका खर्चीला साबित हुआ था वो सॉदर्न पवेलियन एंड से, पर नॉर्दर्न पवेलियन एंड से पहली गेंद पर सफलता। एक बहुत बड़ी विकेट इश्तियाक रॉबी की। 84 पे 2, 7 के बाद विकेट अवश्य चाहिए थी क्योंकि दबाव बनता चला जा रहा था। समाप्त अमान अलवी नए बल्लेबाज अल समद क्रिकेट क्लब के लिए नंबर 4 पे। अलवी और गुल्टान ये जोड़ी अपना आबाद बीच मैदान में, और दायित्व निभाना होगा अलवी और गुल्टान को। वसीम रजा को एक विकेट की खुराक मिल चुकी है। 1.1 ओवर 23, वो पिछला ओवर काफी खर्चीला गया था। वसीम रजा का 23 आए थे उस ओवर में और कड़े प्रहार उनके विरुद्ध किए थे हिलाल कलर्ड ने, पर अंततः उन्हें पहली सफलता मिलती हुई। और इश्तियाक रॉबी जो एक बेहतरीन और विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका विकेट वसीम रजा को मिलता है। 84 पे 2, 8वां ओवर। बाएं हाथ के अमान अलवी सामने, अच्छी गेंद थोड़ा ऑफ से बाहर, धीमी गति की गेंद थी, सीधे बल्ले से वापस खेला, पर रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, विकेट की तलाश। ये अमान अलवी का स्ट्रोक सीधे बाउंड्री से बाहर। 6 ओवर मिलते हुए 90 रन संख्या जा पहुंची है इस छक्के के साथ। वसीम रजा के विरुद्ध ये छक्का गेंद की पिच तक पहुंचते हुए और खूबसूरती के साथ 6 रन और अर्जित कर लिए यहां पर बल्लेबाज ने। कमाल का स्ट्रोक और एक बार फिर उड़ाया था पर सीधे फील्डर के पास। इस बार फील्डर को भेद नहीं पाए। पहली गेंद पर छक्का, एक बार फिर उसी क्षेत्र में उसी प्रकार का स्ट्रोक, पर इस बार फील्डर तैनात, उन्होंने कैच कर लिया। रजा को मिलने वाली इस ओवर में दूसरी सफलता। अलवी 6 तक सीमित रहे, उनकी पारी। एक छक्का अगले गेंद पर चलता किया वसीम रजा ने, और दूसरा विकेट इससे पूर्व इसी ओवर में, और अब जाकर के तीसरा विकेट प्राप्त किया है यहां ग्लोबल डडू टाइटंस की टीम में। शानदार कैच वहां पर लपका है इस्माइल ने संभवतः, और अमान अलवी को चलता किया यहां पर वसीम रजा ने। तीसरा विकेट गंवाया है 90 पे 3, 7.4 के बाद। Wasim Raza coming to the rescue, and he's doing that in some style here. He has picked up 2 of them. Aman Alvi, little stay out in the middle and has gone back. Just 6 off his bat, and he departs. He perishes.
90 for 3. That brings newcomer in at number 5. Left-hander will join Adil Gultan in the middle, going with that right and left-hand combination. The Dio knowing that they need to repair it again. They need to overcome, as 2 wickets falling in quick succession. In a space of 4 balls, we saw 2 of the batters. Both were set. One was extremely well. He was absolutely okay, fine with the bat. All of a sudden, ball hold it up a bit, and he handed easy cash to Wasim Raza on that occasion. It's 3 for 90. Straight away goes for the sweep. It's going to run down to the backward of scare area. Will Phil cut it off? Will he get to the ball? It's going to tease. It's going to annoy. I think it's a good stop. We'll have to wait and watch. Irfan is there. Irfan Mir, famously known as Irfan Lara in this part of the world. Amir lefty straight away shaping for that sweep shot. And goes for the sweep shot. Connects it. I think good stop. Saver 2 runs. Invaluable contribution. Now 3 runs scored by 2 batters. That means he saved just a single for his team. That is still important. Adil Gultan on strike. 93 for 3. Raza, good delivery again. Batter line. Back and cross batter. Not for runs. 8 gone. It's 3 for 93. Look how things are changing. There was a kind of a drastic change. In space of 4 balls, 2 wickets falling. In space of 9 runs, we have seen 2 wickets going back to Hut. The good thing about Aman Alvi, he walked in and decided to take him on. First ball gone for runs, gone for 6. Second ball, that was again a big shot, but that was absolute blinder. That was spectacular run by the fielder at boundary line. Never easy when you're just inches inside the boundary line, holding on to the ball. The fitness, the commitment, and the awareness of the game is of next level. 3 for 93 after it was 9th over is about to start. Amir has got Adil in the middle. How Amir and Adil will carry on. They need a partnership at the moment. Stage is set. Can they carry on and are they gonna go after the bowlers? Will they set things ablaze again? The way we saw Hilal colored at the start of the innings, it was remarkable. As it was going just like that, downtown and distant. Are the 2 batters going to carry on and continue? What these 2 lads will do now. The batters in the middle, Adil Gultan, and he's got Amir lefty, the other batter. Global Dadoo Titans, to some extent, pulling things back a little bit. Getting rid of 2 of the batters in quick succession. JK Super Cement. Red Premier League Season 2, presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. Wicket is getting better nowadays. Both the pitches are looking okay and fine. But in second innings, there is a slowness in the deck. It looks like that too pacey at times. But today it looks again a belter, full of runs. Batters with application will score runs. Those who are going to be impatient won't be successful. They have to adjust here and adapt to the conditions. 9th over, Gawar Rashid is given the ball. Raza ball 2 was 2 for 32. First over that gone for 23. In the second over conceded 9 around that. But picking up 2 important wickets. Gawar Rashid for the first time. Good delivery to start with. Directed needed on the other end. Gawar Rashid decided against it. He thought there isn't anyone backing up. And the fielder at long off, he needed to cover almost 10 yards. Had he decided to go with it, he changed his mind in the very next second. First ball, dot delivery. 93 for 3. The 2 men in the middle. How it is Sunil Kumar displayed. It was Amir lefty shown earlier on. Scorer once again rectified it. It's Sunil Kumar. And there is a shot for LBW, and up goes the finger. Is given out LBW straight away. Interesting. It is Sunil Kumar. It was displayed as Amir earlier on. Now it is Sunil Kumar who's given out straight away. Trapped well in front. Plumb in front. Good call. Good decision from umpire. And Global Dadoo Titans all of a sudden finding their voices back. They're coming live. Oh, that one stays low. That was tough one to keep away.
Look, he was pleading before Ravi Kumar Chaurasia, and he finally gives it in favor of bowler there. Sunil is gone here. He walked in and is going back to pavilion. Take a look again. Bit difficult to tell from this angle. The only thing that remains to be seen, did it hold up a bit and has it straightened it up a bit? That's another thing. If it has, then going to hit the leg pole. Good call in the end. 93 for 4. We're into the 9th over. This over first ball dot, and Gawar Rashid, the crisis man for his club, for his team, coming up with a breakthrough that brings the arm a lefty from Kupwara. Now he's in. He's also a lefty, and there was a kind of a mistake. Now he's rectified. Thanks to our scorer. Thank you very much. It is an easy job. It takes energy, it takes calories, it takes presence of mind. 4 for 93 into the 9th over. This is the beautiful sports field of Bakshi Stadium, which is holding and hosting Red Premier League Season 2. Title sponsor JK Super Cement, presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. Those who want to be physically here and those who want to buy tickets and watch the match here at the center, you have to log on to www.district.in to find the ticket, and you can buy it there. Once you're done with that, you can enter the stadium. 93 for 4 into the 9th over. Gawar Rashid in his very first over draws the blood. Important one for Global Dadoo Titans. They were under the pump as batters were cashing on. They were going after each and every delivery in their own style, and I call it that their own brand of cricket. And that's what T20 cricket is all about, enterprising and entertainment. Fresh ball for the newcomer. He works it away onto the onside. Are they going to look for the second? No way. Just a single for Amir Lefty. As he opened his account, Amir Lefty need to show something today. One more batter from Al Samad. He's yet to impress people here. And in the meantime and meanwhile, he's yet to express himself on a bigger stage here at Red Premier League. And this is day number 9 and game number 15 underway as we watch Gawar again in his very first over, trying to keep things in control. He's trying to tighten the nose. Dabs it away. Wanted single, won't get. Direct hit. And these are going to be overthrows now. They're going to look for 2. Are they going to push for the second one? No way. Only single. So on that occasion, just a single accrued. With that, it's 95 for 4 as we are in 9th over. 9th over. Gawar Rashid is bowling in his very first over and is keeping things tight here. He's putting certain amount of pressure on batters, and ball is holding up a bit. Sometimes it's keeping low. It stays low. We have seen that against the likes of left-hander Sunil Kumar, where it kept too low. It was hard for Sunil Kumar to work it away. He got hit on the pad right in front. Now slip added to the fold. Good shot there. Nice control. Dropping his wrist. Blocks it away right behind it. Little attendance this evening. Gentle breeze. Blue skies. Floodlights are on. Underlights. Let's see how the game will go on with the passage of time. This is the 9th over. Al Samad started all guns blazing. Oh, next one. Bites the dust and Amir Lefty is gone. Clean bowled up the bowling of Gawar Rashid. Castled and cleaned him. What's going on? 1 minute up, next minute down. And Al Samad are struggling now. Unable to adjust here. Amir Lefty. It keeps low again. Take a look again. Look, that one. He jumped on that occasion. What he was trying to do. As ball keeps touch low beneath the bat. 5th one down. Half their team back to hut. Gawar Rashid has the last laugh. Eventful over for Global Dadoo Titans. People who are dropping their comments and unaware of this, that this is the game of glorious uncertainties. Staying in their dens, talking about the cricket,
things can change. It looked a good wicket to bat on. All of a sudden, it changed it a bit, or we can say that drastic change in this over as ball isn't rising. The other thing is that this lad, I believe that he has something special in his arm. Not just taking pace off the ball, but he's keeping it a bit low at the moment. He's going with that tactic. He's not hitting the deck hard. He's just releasing the ball. And that makes it so special and hard for the batter to pick and understand. 9 overs, 95 for 5. From cloud 9 or back to the A horizon. Adil Guldan 15 stranded on the other end. Newcomer has a role to play. He has to bat around Adil Guldan. Make Guldan break free. Raza gone for 23 of his first over. Then coming back. It's where games started to change. And this lad worked as a catalyst. Brought about a change. And be the change? It was Wasim Raza with the ball. 95 for 5. Guldan on strike. Samar Amin is in at number 7. Guldan works it away. Shuffle across. In the gap. He's going to look for 2 here. And Samar responded. Smart cricket from Guldan there. Much needed brace. 97 for 5 into the 10th over. पिछले कुछ मुकाबलों में देखा गया है लगातार शुरुआत बेहतर हुई है 30 से 40% मुकाबलों में देखा गया है 6 ओवर में 60-70 रन आपने जोड़े और उसके बाद एकदम से वो 3-4 विकेट वो विकेट्स लगातार गिरे हैं तो कहीं ना कहीं वो कहानी जरूर एक बार फिर इस मैच में भी दिखी है क्योंकि 6 ओवर में करीब करीब 75 रन बने थे 2 विकेट मात्र खोए थे और इस समय 10वें ओवर में मात्र 97 और 5 विकेट गंवाए हैं टीम अल समद क्रिकेट क्लब ने। आदिल गुलडान सामने इस बार ऑफ स्टंप पर आते गेंद तिरछे बल्ले के साथ को सिर्फ दिशा दे दी प्लीज की ऑफ साइड में दौड़ पड़े 1 रन के लिए। अच्छी रणनीति क्योंकि जानते हैं बड़े स्ट्रोक्स अब यहाँ से लगाने थोड़े मुश्किल जरूर है क्योंकि विकेट 5 गंवाए हैं तो ऐसे में अतिरिक्त जोखिम उठाना नहीं चाहेगी टीम अल समद क्रिकेट क्लब। गुलडान 17 पे अच्छी गेंद थी वसीम रजा की स्टंप्स पे गेंदबाजी हो रही है बिल्कुल भी अवसर नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को। वो पहला ओवर उनका थोड़ा खर्चीला जरूर गया था जिसमें 23 रन आए थे उसके बाद आते ही उन्हें रॉबी को चलता किया और उसके बाद फिर लगातार विकेट दिलाए। वसीम ने 34 में 2 विकेट प्राप्त किए हैं। एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक गए थे पुल करना चाहते थे पर गेंद में गति थोड़ी ज़्यादा थी क्विकर वन का इस्तेमाल किया जरूर था वहाँ पर पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई वहाँ पर बल्लेबाज को और ऐसे में रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। रन संख्या अभी भी टिकी हुई 97 पे। ये देख लीजिए अपील जरूर की थी पर उस अपील का प्रभाव नहीं बलविंद्र कुमार पे। रिवर्स स्वीप सीधे फील्डर के पास पर कैच छोटा प्रयास था फील्डर का यहां पर एक मौका जरूर आया था पर वो मौका गंवाया यहां पे टीम ने ऑप्शन से बाहर निकलती हुई गेंद पर रिवर्स स्वीप के अंदाज में और रिवर्स स्वीप खेला जरूर था पर यहां कैच छूटा। ये देख लीजिए और थोड़ा मुश्किल जरूर था पर संतुलित हो नहीं पाए वो संतुलन बना नहीं पाए वो संतुलन उनका बिगड़ा जरूर वहां पे और इस प्रकार से वो कैच छूटा। एक और जीवनदान गुलडान को मिलता हुआ 10 की समाप्ति अल समद क्रिकेट क्लब 97 5 विकेट पे। ग्लोबल डडू टाइटंस की टीम पहली जीत की तलाश में और ड्रिंक्स ब्रेक ले लिया गया है 97 में 5। जे के सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग नए ख्वाब नए इरादे और एक नई सोच जे के सुपर सीमेंट साथ बनाए एक मजबूत कश्मीर। यह कश्मीर का वक्त गेम बदलने का। जे के सुपर सीमेंट बिल्ड स्ट्रांग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल अथवास विद कॉन्फिडेंस। 97 पे 5। राजा 2 विकेट 34 रन दे करके 3 ओवर में पर क्या यहां से अल समद क्रिकेट क्लब की टीम एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच पाएगी ये देखना होगा क्योंकि आसान परिस्थितियां नहीं है।
दो बेहतर बल्लेबाज बीच मैदान में, क्योंकि समर एक बेहतरीन बल्लेबाज है, एक विस्फोटक बल्लेबाज है, आदिल गुलडान भी उसी शैली के बल्लेबाज है, तो आपके पास क्षमता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर उस क्षमता का आपको प्रयोग करना वो जरूरी है, क्योंकि जितना आप बेहतर तरीके से उस क्षमता का प्रयोग कर पाएंगे, परिस्थितियों के अनुकूल बल्लेबाजी कर पाएंगे, वो आपके हित में और आपकी टीम के हित में बेहतर कहा जा सकता है। 10 ओवर अभी भी शेष हैं और पहले सत्र में 10 ओवर के सत्र में 97 बने, 5 विकेट खोए, आधी टीम पवेलियन लौटी 10 ओवर में। शुरुआत हिलाल कलर्ड और इश्तियाक इलाही रॉबी ने की, वो आक्रमण शुरुआत, कलर्ड ने 39 बनाए ताबड़तोड़, रॉबी ने भी आक्रमण किया, उन्होंने भी एक बेहतरीन तेज तरार पाली खेली, और उसके बाद अमान अलवी ने एक छक्का लगाया अगली गेंद पर, वो चलते बने, और फिर सुनील कुमार भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, और आमिर लेफ्टी भी खास योगदान नहीं कर पाए और वो भी बोल्ड हुए। तो ये 5 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। 97 रन बने। अगले 10 ओवर 5 विकेट आपके हाथ में, समर और गुलडान की जोड़ी बीच मैदान में, तो कहीं ना कहीं 180 190 तलाश रही होगी यहाँ पर अलसमद की टीम। जीटी टाइटंस की बात करें, वो 2 मुकाबले पिछले हारे और कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास में कमी जरूर दिखी है, पर यहाँ एक नए आत्मविश्वास के साथ उनको शुरुआत करनी होगी, और अब तक बेहतर प्रदर्शन उनका रहा है, 5 विकेट उन्हें, फिर यहाँ से इस मोमेंटम को शिफ्ट होने नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको विकेट चाहिए, 1-2 विकेट जल्दी जल्दी चटकाने होंगे, खासकर इस जोड़ी को वापस भेजना होगा, तो फिर आधा काम आपका समाप्त हो जाएगा और फिर आप बड़े लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकते हैं टीम अलसमद क्रिकेट क्लब को। Is Bilal Pandya playing today's match? He's playing for Al Samad and he's in the playing 11, and Bilal Pandya is going to be another X factor if he gets going. There are going to be always ifs and buts when it comes to the Bilal Pandya. 98 for 5 after 10 overs, halfway stage. Summer is going through good days. He's having good form over the past couple of days. He's carrying that form. Is he going to continue in today's match? That's going to be important thing. It's 98 for 5 after 10 overs. Captain has brought cover again into the attack. 1 over. Look at 2 runs and 2 wickets. It looks like that football score 2-2. Cover Rashid in his second over. 98 for the loss of 5. On strike is going to be Adil Guldan. Adil need to go big. Adil need to keep things tight. Adil has huge responsibility on his shoulders. He has to maintain everything here. He has to rotate it when required, go big. Whenever he feels that it's in my arc, it's in my zone, just try to clear the rope, and let's see what he will do in this over. As Gawar Rashid, he has got that potential. He can tease and unsettle. The very first ball, Adil trying to put pressure on the ball straight away, showing that intent, showing a kind of aggression, goes onto the front foot, but connects that thin air which was around the bat. 98 for 5 into the 11th over. They need a partnership. Al Samad Cricket Club. All of a sudden, Wasim Raza and Gawar Rashid wreak havoc with the ball. Next one keeps it away, keeps him true. Unable to hit that one. He was trying to unleash again. He was getting in position, but that wasn't a hit me delivery. Gawar Rashid, he's bowling his second over. He has picked up 2 wickets for just 2 runs. Raza, who was earlier on expensive in the second spell, talking about his accuracy and precision, that was full of luster in his second spell. Again, a good ball. This could be tied. Directed needed. But that is a wayward return from Samir Bell there. Adil Guldan was running towards the danger mark, danger end. Would have been Adil, man in question. That brings Samar Amin for the first time to face the likes of Gawar in today's game. This is JK Super Cement Red Premier League, presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. That confidence is needed by the striker. Good delivery. Nice way to welcome. Imtiaz lefty tried that single. Denied any possibility of a run. That's good cricket from Imtiaz there.
The newcomer trying to cage him for a while. Samar Amin is an aggressive batter. If you keep him under check, he will try to break free. And sometimes it can backfire the striker. Keeps it away to short cover, not for runs again. As Gabbar Rashid is keeping it simple and tight with that pinpoint accuracy. Straight to ones. And at times it's keeping low. That is keeping Samar Amin on his toes. Batter is thinking over it again and again. He has to adapt and adjust. Can't go across the line. He can't offer a big shot without knowing where the ball is. He has to read it properly. So is the batter doing at the moment. 99 for 5. That's a good looking shot. But Finder's fielder again in place. Directed this time. And he deviated a bit. Not for runs. 99 for the loss of 5. What's going on? From one end to the other end. And it's 11 gone. They are 5 wickets down. With 99 on the board. There is going to be a check for the run out. The decision is sent upstairs. Scare leg umpire asks a TV umpire to assist. They will look into this one. And talking about the batting unit, from high flying zone to low lying tatters, who would have thought that? But that's what cricket is all about. That's the beauty of game. They're checking that run out there. TV umpire is looking into it. In a hurdle, Global Dadoo Titans. Pep talk, discussion is going on. Imtiaz lefty. And all the lads are backing Imtiaz lefty. Now he's going to operate. He's got the ball in his hand. And still decision is pending. And on the other side, there is pep talk going on. Discussion is going on that who will operate and who's going to ball. All telling that it's going to Imtiaz lefty, the better option right now. He's home, no problem there. Not out, displayed on the big screen. Guldan survives. Samar is yet to open his account. Guldan 19. Gabbar Rashid 2 was 2 for 3. Wow, amazing figures. Interesting. 2 overs, 2 tight overs. Just 3 runs away. And he has clamoured 2 of the batters. Wicketkeeper up to the stumps. That one. That's gone. Some 7 or 8 rows back for a maximum. He picks that one up nicely. Gorgeous bat speed. And he puts that one away. Imtiaz lefty. There is going to be little amount of pressure on bowler right now. Bending his knees. Shuffle across. Nice adjustment. Oh, there is going to be the competition in the crowd. No, I'm going to take this. The other one says, no, let me take it. And both dropped in the end. Should have been taken. 100 comes up. 105 for 5. Nice block from batter. Gently back to the bowler. No problem there. It's 105 on the board. At one stage, they were running away in middle overs. Bowling unit pulling things back in a wonderful manner. Now making the batters toil hard. It's number 6 and number 7 in the middle right now. We can say that as of now. But Guldan, he walked in at number 3, I think, or number 4. That was his original position. Now looking at the situation as they're all already 5 down. It's number 6 and number 7 there. Good delivery. It stays low. It keeps low again. You can't trust the bounce of surface. Right now it is staying low. It's keeping low again. And batters need to bend their knees. That's the important thing. Bend your knees. Try to get to the ball. Standing tall won't work again and again. This time it was in the zone. Trying to sweep it away. He has that speed. He's got that power in his arms. Trying to unleash again. Doesn't connect. Nonetheless, he's going to chip in with a leg by there. 106 for 5. The last ball of over is going to come. He's gone for 16 of his 1.5. What he will do now? Conceded 7 of 5 balls. Will it be a fine one? And will it go all the way?
Could be tight again. Directed needed this time. Dardish unable to hit the bullseye. Unable to hit the target. The two batters chip in with a single. They pinch a single. They crossed over. 107 for 5. 12 done. 8 overs remaining. 48 balls. The two batters need a partnership. Their side is in desperate need of a partnership. How the two batters will gain that confidence. One thing, they need to bat through the 20 overs. That's the important aspect. Other important thing is to keep wickets intact and keep going, as you are here to set the target for the opponent side. You are the side who are going to set the target. So you have to set it around that 160, 170, which will make it a good contest between bat and ball. And later on, we're going to see that how things will unfold in inning number 2. But at the moment, it's up to the two men in the middle, Gawar Rashid, to continue. No change in bowling. Captain believes that he has that knack of picking wickets. He will remove one more here. He will provide us another important breakthrough here, as he's showing belief. He's backing his bowler here, as he has already done the damage, picking up 2 important wickets earlier on. They're eyeing one more breakthrough here, one more important wicket. They're trying to unsettle this pair in the middle. As rightly mentioned by Nazir earlier on, if they go through this one, if they remove both of them, then there isn't going to be too much to wrap it up. It won't take them too much time to go through that later order or the tail. Cracking shot. Find his man in place. Will just be one. That's all he's going to get. The bat speed is enormous. Ferocity is there. Can't get it either side of the fielder there. Finds him to perfection. 108 for 5. 108 के बाद एक सिंगल 109 पे 5 13वां ओवर समर 2 आदिल गुलडान 26 गवर रशीद 2.2 ओवर में मात्र 5 रन दिए हैं 2 विकेट और पहनापन अनुशासन किफायती कस्बी गेंदबाजी मिडल स्टंप पे हल्का सा उछाल था ऑन साइड में 1 रन के लिए दौड़ पड़े जब तक वाइडिश लॉन्ग ऑन से गेंद को फील्ड किया था समय दोनों बल्लेबाजों के पास कुछ रन बटोरने का रन संख्या में वृद्धि 111 यानी कि नेल्सन 111 13वां ओवर 110 क्षमा कीजिएगा अथवा 111 जी हाँ 111 5 विकेट पे 2 रन आए थे पिछली गेंद पर और ऐसे में 111 रन बना लिए हैं अल समद क्रिकेट क्लब की टीम ने ग्लोबल डाडू टाइटंस के विरुद्ध 15वां मुकाबला इस टूर्नामेंट का गवर रशीद ने अच्छी गेंदबाजी की एक और अच्छी गेंद एक और बेहतर गेंद पर सामने सीधे बल्ले से खेला जरूर है उम्मीद ऑफ है तैनात दर्दिश के रूप में उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया अरे 1 रन जरूर मिलेगा दर्दिश अथवा इरफान ने गेंद को फील्ड कर लिया जी हाँ अरे सिंगल वहां पर प्रयास दोनों बल्लेबाजों का उसमें सफलता मिलती हुई 1 रन और इस ओवर में 3 सिंगल 1 डबल कुल मिलाकर 5 रन आए हैं 4 गेंदों से अच्छा ओवर वो गवर रशीद ने मात्र 8 रन दिए हैं 2.4 ओवर की गेंदबाजी में वो आक्रमण किया है उन्होंने बेहतर सही दिशा और लंबाई के साथ और नियंत्रण दिखा उनकी गेंदबाजी में इस बार गति परिवर्तन धीमी गति की गेंद चकमा दिया एक बार फिर यहाँ इन परिस्थिति में आपको बल्लेबाजी करनी पड़ना होगा गेंदबाज को क्योंकि इस विकेट पे गेंद थोड़ा रुक करके आ रही है कहीं गेंद पड़ने के बाद नीचे रह रही है उतना ज्यादा उछाल है नहीं टू पेसी विकेट जिसे हम कहते हैं और जरूर है कभी कुछ अतिरिक्त उछाल कभी कोई गेंद बिल्कुल नीचे रह रही है तो ऐसे में आपको पढ़ना जरूरी है इस विकेट को बड़े धैर्य के साथ मानसिकता संयम आत्मविश्वास सभी चीजों का मिश्रण करके आपको यहाँ से बल्लेबाजी करनी है 112 पे 5 13वां ओवर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना जरूरी रन गति पे वो कार्य किया जरूर है गवर रशीद ने इस बार फुलर लेंथ की गेंद खेले जरूर पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता लगभग मिड विकेट क्षेत्र से दोनों बल्लेबाजों के पास समय था और रन लेने का सिंगल जरूर मिल जाएगा 1 रन और ओवर की समाप्ति 13 समाप्त 113 पे 5 समर 5 गुलडान 27 गवर रशीद 3 ओवर 9 रन 2 विकेट 3 का इकोनॉमी 2 विकेट भी मिले और उतनी ज्यादा मात्रा में दर्शक तो है नहीं पर जितने भी हैं एंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को जेके सुपर सीमेंट
नए ख्वाब नए इरादे। रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल। अथवास विद कॉन्फिडेंस। 113 पे 5, 13 समाप्त। 7 ओवर का खेल बचा है पहली पारी में। कोशिश जरूर होगी यहां कुछ बेहतर और शानदार प्रदर्शन करने का। 7 ओवर में 10 रन प्रति ओवर 70, तो फिर आप 180 185। और वही दूसरी ओर अगर जीडी टाइटंस की बात करें, उनका प्रयास जरूर होगा कि कम से कम लक्ष्य तक रोकें। वसीम रजा का चयन पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे, ताकि थोड़ी सी ओवर पिंच गेंद जरूर थी, पर अपनी जगह खड़े खड़े इस गेंद तक पहुंचने का प्रयास असफल रहा और गेंद विकेट कीपर के पास। हालांकि उन्होंने स्टंप्स भी खेले, पर सुरक्षित क्रीज में सरशील अब्बास, जो कि विकेट कीपर, जहां तक सवाल है जीडी टाइटंस का। गुलडान सामने 27 पे 29 गेंदें खेली है। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि 29 गेंदें आदिल गुलडान ने खेली है, 27 रन बनाए, तो इस विकेट पे बल्लेबाजी करना उतना आसान है नहीं। 13.1, 113 पे 5, वो भी स्पिन गेंदबाजों के विरुद्ध। इस बार कनेक्शन सही, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए गुलडान के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का। तलाश रहे थे पिछले कुछ समय से स्ट्रोक को, यहां कनेक्शन सही समय पे या उनकी रेंज में वसीम रजा के विरुद्ध ये जगह बना करके खूबसूरत स्ट्रोक था। 6 रन और खाते में जोड़ लिए और रन संख्या में वृद्धि होती हुई अल समद क्रिकेट क्लब 14वां ओवर पारी का 119 पे 5। गुलडान लगातार प्रहार कर रहे हैं, एक बार फिर हवा में गेंद, पीछे फील्डर हैं और 2-3 खिलाड़ी उस ओवर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन और खाते, और अब रन गति को बढ़ाना जरूरी है, अवश्य है। 14वां ओवर चल रहा है, 121 पे 5 इसमें रन संख्या। तेरह दशमलव 3 ओवर की गेंदबाजी, 121 पे 5, और इस बार रिवर्स स्वीप, खूबसूरत, बेहतरीन और सीधे और ग्रैंड स्टैंड्स में एक और छक्का। गुलडान की क्षमता है, बल्लेबाज के पास अनुभव की कमी नहीं है। थोड़ा सा शुरुआत में शांत और आक्रमण शैली से बल्लेबाजी कर रहे हैं। बेहतर स्ट्रोक था, खूबसूरत आदिल गुलडान के बल्ले से, और इस स्ट्रोक के साथ ही रन संख्या पहुंच गई 127 वसीम रजा के विरुद्ध। ये कमाल का स्ट्रोक था, बेहतरीन, और कनेक्शन भी सही मिडिल ऑफ द बैट से। 6 रन और खाते में गुलडान के, और 6 रन अल समद के खाते में। ये देख लीजिए, और कितना जल्दी पिक कर लिया उस स्ट्रोक को आदिल गुलडान ने। कवर रशीद वसीम रजा से कोई बातचीत करे, वसीम रजा थोड़े खर्चीले, काफी ज्यादा खर्चीले साबित हुए। 3.4 2 विकेट जरूर, पर 49 रन उन्होंने दिए और इस ओवर में 2 छक्के और 1 डबल, कुल मिलाकर 14 रन इस ओवर से भी आ चुके हैं। गुलडान 41 पे 32 से समर 5 पे 127 पे 5, 9.29 प्रति ओवर। और थर्ड अंपायर एक डिब्बा लेकर के जरूर पहुंचे गेंदों का, अब जाकर के गेंद लौटी है। काफी बड़े स्ट्रोक खेले हैं, आक्रामक कर रहे हैं यहां पर बल्लेबाज इस मुकाबले में। और जीडी टाइटंस को 160 170 तक सीमित रखना होगा, फिर जाकर के वो कुछ बेहतर प्रयास कर सकते हैं। हालांकि क्रिकेट महान अनुचिंताओं का खेल 190 इस विकेट पे चेज हुए हैं। यहां देखना होगा उनके सामने लक्ष्य क्या रहेगा, फिर एक अतिरिक्त दबाव तो जरूर होगा बड़े लक्ष्य का। और जीडी टाइटंस पहले से ही 2 मुकाबले हार चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो भी उनके जहन में होगा। 127 पे 5 रजा, सामने आदिल गुलडान, इस बार सम्मान दिया ऑफ साइड में। दौड़ पड़े थे रन के लिए, पर वापस लौटना पड़ा सुरक्षित क्रीज में। और समर ने उनसे बातचीत की कि भैया हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं है, आपके पास अभी समय है, मात्र 13.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अभी भी 6.1 ओवर आने बाकी है। कुल मिलाकर 37 गेंदें अभी भी शेष हैं। यहां कुछ रन जरूर मिलेंगे। एक पूरा किया, पलटकर दूसरे रन के लिए वहां से हल्का थोड़ा पंबल हुआ और नतीजा 2 रन और खाते में। अंतिम गेंद पर 2 ओवर की समाप्ति, 14 समाप्त, 129 पे 5।
Al Samad Cricket Club. Cracking display by Adil there. Switch it comes into play. Sandpacking out of the center. Second time in today's game. We lost the ball because of Guldan. And other two instances where when Ishtiaq Robi made the ball fly out of the 1-9 for the loss of 5. 14 overs done. 36 balls are going to come. 6 overs. 10-0, 190. More than that is going to be something. They will feel that they're in the driver's seat. They have something to bowl at. And the bowlers will definitely feel that kind of a psychological boost, and they will have something to cheer and giving them extra bit of cushion. That's going to make it so special and ever so special. 1-9 for 5. 6 overs are going to come. 36 balls. Guldan finding his way back onto 43 of 34 balls. Some of the switch hits coming into play. That just sum up what kind of confidence he has gained by hitting those magnanimous sixes out of the park. Timing the ball to perfection. Middling. Finding the areas where he could score and where he can score. He has did that in style here. Moves to 43. Summer to face the likes of Ismail. 2 was none for 15. Wicketless Ismail. There is extra bounce. Shot for caught behind. Unmoved. Ravi Kumar Chaurasia. No problem there. There was a big daylight as far Chaurasia is concerned. 1-9 on the board. Ismail bowled 2 overs with the economy of 7.5. Is he gonna contend the 2 batters? Will he do that in some style here? Is he gonna keep the batters under check? Will he tighten the nose? What can he do? In the meantime, Samar Amin with that cracking shot down towards wide of mid-off is back for the second. It's 1-3-1 for 5. Ismail is trying to weave that magic. Samar is trying to keep him away. That one fetched it from wide of the off, and he's gonna get a single there. That brings Guldan back onto strike. 132. This is the 15th over we are in. They started all guns blazing in the middle overs. We saw wickets coming in bundles. 5 of them gone back to hut. All of a sudden things changed. But the 2 men in the middle, they are trying to repair the damage which was done earlier on by Wasim Raza and Gawar Rashid. The duo, pace and spin, a force to reckon in today's game, picking up 5 wickets in that quick successive wickets coming. Ismail to bowl wide of the off. He makes room and he's trying to put pressure on the ball. Look at that when it goes down to the backward, a point boundary for 4. Everyone would love to have that replay again. Watch this one again. Where he was, he decided to stay too much leg side, exposed all the wickets, then chased it down, and it gives him 4 more runs there. And with that boundary, it tells everyone here and all of us that how confident he's looking this evening with bat. Moves to 47 of just 35 balls. Ismail will be under pump. That one again. There is a man at point. Is he in trouble here? Yes, indeed, he's in trouble. He's taken by Adil Dada this time. It's wicket number 6 down. Against the run-up play, gained that confidence, thrown his bat at it, but this time he gets the elevation, not the distance. It could only reach Adil Dada there at point. Ismail gets his man. He removed Adil Dada. He has the last laugh. He has his revenge as he was trying to put pressure on Ismail, and Ismail comes up with one more flighted one outside of Guldan, making room. Look at the celebration. Look at the funny moments in the middle, telling him, oh, come on. It was my hit on you. You were hitting the ball. Now it's my shot. It was my time to turn the tide. Look, that one landed safely. So it means 1 more wicket down. Funny celebration from Ismail there and telling
Guldan, you have to go back, scoring quick fire 47 and lost his ship in the end. 4 sixes, 2 fours with a strike rate of 130. Guldan playing that cameo after a long time for Al Samadir. Samar is in good form nowadays. It's up to Samar and the newcomer who just joined it. Samar in the middle. It's 1-3-6 per 6. 5 overs are going to come after this one. 31 balls with 4 wickets in kitty. What they're going to look for in the remaining 5 overs. Harsh Yadav is in at number 8. Harsh comes in. Is he going to be harsh with the bat? Will he take some time to get his eyes in? Ismail on the other side. He's going to look little confident after getting rid of the danger man. The one who can easily destroy the opponent side with his cracking shots, switch hits and the sweep shots. 1-3-6 on the board. Harsh keeps it away. Wanted a single, could be tight. Imtiaz unable to release the ball. 1-3-7 to end the successful over number 15. It's the successful over and a success for Ismail in this over. 5 overs, 30 balls. Al Samad are 1-3-7. 15 समाप्त 137 अल समद क्रिकेट क्लब। हालांकि आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। शुरुआत आज हिलाल कलर और रॉबी ने की। कुछ बेहतरीन और तेज तरार पारी हिलाल कलर द्वारा और उसके बाद फिर रॉबी ने भी बेहतरीन पारी खेली और फिर 2-3 विकेट जल्दी गंवाने के बाद एक साझेदारी निभाई वहां पर समर और उनके साथ आदिल गुलडान ने। पर गुलडान अपना विकेट गंवा बैठे 47 रनों की पारी खेलने के बाद वो छठे विकेट के रूप में मैदान से बाहर चले गए। तो 137 पे 6, 15 ओवर की समाप्ति। समर 8, हर्ष यादव 1, इस्माइल को अब तक 1 विकेट मिला है 3 ओवर में 23 रन देकर के। 9.13 का रन रेट। आखिरी 5 ओवर का खेल। 10 रन प्रति ओवर 50 तो 187। कोशिश जरूर होगी वहां तक पहुंचने की अल समद क्रिकेट क्लब को। डडू की अगर बात करें, ग्लोबल डडू टाइटंस की, उनका प्रयास जरूर रहेगा कि वो कम से कम लक्ष्य तक रोक पाए यहाँ टीम को। सलीम मीर इस्तेमाल किया जा रहा है उनका यहाँ गेंदबाजी में। पहला ओवर सलीम मीर का, 16वां ओवर इस पारी का। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकेंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। आखिरी 5 ओवर, सलीम मीर तैयार गेंदबाजी के मोर्चे पे और हर्ष यादव सामने सलीम मीर का सामना करने के लिए। 137 अच्छी गेंदी, बेहतर गेंदी और कुछ अलग प्रकार का अंदाज अपनाया जरूर था यहाँ हर्ष ने। हाँ, हर्ष यादव के अंतिम ओवर्स में एक बेहतर बल्लेबाजी की आवश्यकता, क्योंकि अल समद को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचना है। तो फिर यहाँ से अंतिम 5 ओवर में आपको करीब 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे। जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब और उसके अलावा रेड एफएम जेके के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। एंजॉय कर सकते हैं आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट को। एक सिंगल मिल जाएगा यहाँ पर हर्ष और समर को। समर में भी क्षमता है बड़े स्ट्रोक की और समर चाहेंगे कि यहाँ से आक्रमण किया जाए कुछ बेहतरीन। वो अपना प्री के अंदाज, वो हेलीकॉप्टर स्ट्रोक्स अभी तक दिखे नहीं है और उनका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा क्या इन अंतिम ओवर्स में। पर एक बड़ी पारी की आवश्यकता कुल मिलाकर टीम अल समद क्रिकेट क्लब को। एक और बेहतर गेंद थी पर किनारा लगा और गेंद सीधे वहां बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। 4 रनों के लिए ये चौका मिलता हुआ 4 और खाते में। रन संख्या 142 16वें ओवर में। सलीम मीर इनका के पहला ओवर है। ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर ये गेंद थी और बाहरी किनारा लेती हुई गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई थी। चौका मिलता हुआ। रनों की आवश्यकता इस समय टीम अल समद क्रिकेट क्लब को। और ग्लोबल डडू टाइटंस की टीम लेकिन दबाव में जरूर है। पिछले दोनों मुकाबले हारे हैं और यहाँ एक जीत की तलाश में। अल समद ने 2 मुकाबलों में से 1 जीत अर्जित की है। 2 अंक जरूर हैं और 1 में उनको हार का सामना करना पड़ा है। और उनके बाद हिलवीव रजौरी ने 190 चेज किया था इसी मैदान पे। तो काफी कुछ इतिहास जुड़े हैं इस मैदान के साथ। 210, 208 ये सर्वाधिक स्कोर बने जरूर हैं पर चेज करते हुए 190 चेज हुआ है और उसके अलावा 169। तो अच्छे खासे रन वो पिछले 1-2 मुकाबले छोड़ करके अब तक के जितने मुकाबले हुए हैं 60 से 70 बल्कि 80% मुकाबलों में अच्छे खासे रन बने इस विकेट पे टीम्स द्वारा। 143 पे 15.4 सलीम मीर अब तक 6 रन उन्हें खर्चे 4 गेंदों से। हाँ, अपने कदम चूके
वापस लौटना पड़ेगा, डेड बॉल का इशारा। बलविंद्र कुमार सोनी और रवि कुमार चौरसिया, दो ऑन फील्ड अंपायर्स, और थर्ड अंपायर शौकत मैडी, उनके साथ स्कोरर और स्टैटिस्टिशियन जहांगीर जॉन। 143 पे 6, ये सामने खेला है पर एक सिंगल मिल जाएगा सीधे बल्ले से। 1 रन और खाते में। दरदीश गोनी एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं आपके पास। अगर बात ग्लोबल डडू टाइटंस की बात करें, इम्तियाज लेफ्टी, दरदीश गोनी, इरफान लारा, उसके अलावा समीर बेल, वसीम रजा, सरशील अब्बास, बहुत आदिल दादा का चयन हुआ है, तो बहुत बेहतर बल्लेबाजी आपके पास है। पर दूसरी पारी में एक चुनौती जरूर होगी। अंकुश जरूर लगा है क्योंकि बड़े स्ट्रोक आए नहीं है, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। इस ओवर में मात्र एक चौका आया है और उसके बाद से ये 4 सिंगल आए ओवर में, तो कुल मिलाकर 8 रन आए ओवर से सलीम मीर के। ओवर की समाप्ति 16 समाप्ति 145, 6 विकेट पे अल समद क्रिकेट क्लब। 4 important overs are going to come. 24 balls. The two batters in the middle are going to look excited. They have to try their level best. Look for some runs here. Important runs. Each and every run will count here. The two men got their eyes in. One has got the better eyesight and the knowledge of the surface. The other one, Harsh, who just walked in, is now trying to gain that, but he has got little time to adjust here. Just 24 balls. The important passage of play. Which way the game will go? That is going to be the crucial passage of play. The important moment here. Is it going to go the bowler's way in remaining 4 overs? Will batters find a way to score runs? Ismail is going to operate. He's going to finish his quota here. Back for the 4th one. 1 for 23. Summer, his colleague in the middle. Summer and his counterpart need to attack now. Nothing to lose. We are into the 17th over now. Wicketkeeper up to the stumps. Good move. As Summer will try to break free. He's going to dance down the track. He's known for those shots, and this time that kind of a helicopter shot comes into play. And that was hit with lot of authority and power. Gawar Rashid does well. He flicks it back into the play. Are they going to check it? Are they going to look into this one? Is it a clean stop? It's already 144 on the board. If it is a clean stop, then it will stay around that 147. Has he in contact with that boundary cushion there? Did it touch when the ball was in control? Let's see. The TV umpire is going through that. It's at the moment displayed as 145. Decision pending. Decision pending. Yet to arrive. There is little excitement. They're also eagerly waiting for the decision from TV umpire. Will be made. And it will be displayed on the big screen. Officially on the big screen. It's going to be brace. They will have to contend with just 2. It's 147. Brace of the first ball. And that's gone big. Couple of bounces into the fence for 4. He got imbalanced in the meantime. I think he has hurt his left foot a little bit. And if they're going to go carry on with Summer in the second innings as wicketkeeper, and they have to look into this one. Look, he's looking in a kind of a pan a little bit there. It looks like that he has he got imbalanced for a while. Oh, it looks like that he's in deep end at the moment. It was ouch-like response and reaction from Summer. Oh, look. He's limping at the moment. It's 150 up, 151 for 6. Limpingly. Summer is getting ready to face the next one from Ismail, who's gone for 6 of 2 in this over. As I already mentioned that this is going to be the important passage of play. Al-Samad will be eyeing 180 around that. That won't be easy for Global Titans to chase this evening under lights. Especially when the new ball is going to move. That is surely going to move both ways. 151 for 6. Summer 20 of 15. Harsh on 3 of 4 balls. 1, 2, 3, 4, 5, 6 men on the off. Just 3 on the on.
Oh, that one, it's a full toss. It's a no ball. It was caught by the man at long on Gawar Rashid, but to no avail. It's a no ball signaled by the scaling umpire Balvinder Kumar. That means 2 runs added on. He has to reload and re-bowl that one. Above waist, high. Oh, look at it. It is above waist. Given as a no ball. Good call. Oh, brilliant take there. But to no avail. It was a no ball. He tried his level best. Settled in with a quick return and response. 153 now. Free ball coming. Comes down the track, Yash. Inside edge. Salim in pursuit. Will he get to the ball? Is he going to cut it off? On the other side, the 2 batters chipped in with a brace. Good running between the wickets this over. 2-4. Then a no ball and a single makes it 2-2. And that 4 makes it 8. And now this brace will make it 10 of 3 balls here. That no ball cost Ismail to some extent. He has to mend his lines here. He has to control the ball. Lost clutch and control over the ball because of that dew factor, which is visible at the moment. Dew has settled in. Just a single. He will be pretty happy. He will be extremely happy with that one, as he was able to keep it away from Harsh Yadav's hit, and he was trying to smoke it away. 1-5-6 for 7. 6. We are into the 17th over. Samar goes hard at it. Beats the man. It does. That's 4. It's 160 on the board. And now he's putting huge amount of pressure on bowler. He's trying to keep it wide. And Samar is going there. Where to bowl now? Where to pitch it? The one that was wide of the off from wide of the crease. Easy pickings. He fetches that one. He chases it down. Look at his response. It looks like he is struggling at the moment with his left foot there. That one, that's aerial. Where is this one going? Oh, that would have been absolute blind. Gawar Rashid. What an athlete. Acrobatic field right long on. He flicks it back into the play. What could have been a 6. And he limited the scoring down to. We'll have to wait and watch. Laser lights are going on. This is really disturbing for a while. We're going to go through this one again. That was acrobatic stop, and that was acrobatism at its best. Take a look again. Look. Oh, wow. Amazing. Unbelievable. Gawar Rashid, you beauty. He tried his level best. Imbalanced. Jumped in air. One-handed stop there. What could have been a 6. I think he's saved 5 runs for his team. The confirmation is yet to come. Are they checking that one again and again? They're going through this one again. 161 at the moment for 6 after 17 overs. Good stop. Nice work done by Gawar there. Acrobatic skills of next level there. Samar has got that power. It's like wounded line in the middle at the moment. Hurt his left foot there and is still going strong. Almost a 6. But what a stop. Who would have thought that? All of a sudden, he rises to the occasion. Oh, wow. Would have been catch of the tournament. Somehow drags it back into the play. That's the important thing. Saving runs for his team. Somebody will keep the strike. Salim has got the ball. 161 isn't bad. And they're heading towards 190. Who knows? They can push it further. 3 ओवर का खेल इस पहली पारी में 17 समाप्त 161 पे 6. समर 26. हर्ष यादव 6. सलीम मीर का दूसरा ओवर पहले में 8. दूसरा ओवर लेकर के और पारी का कुल मिलाकर 18वां ओवर 190 की ओर अग्रसर. कोशिश जरूर होगी समर इसमें बेहतर प्रदर्शन करते हुए. और इस बार विकेट कीपर से वहां चूक जरूर हुई पर तोड़ करके रन तो पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने. 1 रन और खाते में 162 पे 6. 17.1 ओवर की गेंदबाजी. सलीम मीर के दूसरा ओवर उनका 18वां ओवर पारी का. और यहाँ पे सरशील द्वारा ये कैच छूटा सबब थे और एज जरूर था. सलीम मीर इस ओवर में अगली बार 162 पे 6. 18वें ओवर में यहां सीधे सामने की ओर और सीधे साइड स्क्रीन पे
एक और छक्का, कमाल का स्ट्रोक, बड़ा स्ट्रोक, और 6 अर्जित किए अपने लिए अपनी टीम के लिए। और अल समद क्रिकेट क्लब की टीम बेहतर तरीके से इस मुकाबले को फिनिश करते, इस पहली पारी को फिनिश करते। सलीम मीर के विरुद्ध हर्ष यादव के बल्ले से निकलने वाला छक्का, कमाल का स्ट्रोक था, सही समय पे कनेक्शन हुआ और 6 अर्जित किया अपने लिए अपनी टीम के लिए। अगली गेंद सलीम की, इस बार ऑफ साइड में खूबसूरती के साथ एक बार फिर गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए एक और चौका। 11 रन 3 गेंदों से आ चुके हैं सलीम मीर के। इस ओवर की यदि बात करें, लगातार प्रहार और आवश्यकता भी है यहाँ रन बटोरने की, और उसी कोशिश में अल समद क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी, ये 2 बल्लेबाज ग्लोबल डडू टाइटंस के विरुद्ध एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर। रन संख्या इस समय बढ़ती चली जा रही है। अभी भी इस ओवर के बाद 2 ओवर का आना बाकी, 172 पे 6, इस बार हवा में उस ओर खिलाड़ी ये कैच थमा दिया और इस प्रकार से पारी हो गई समाप्त। हर्ष यादव को वापस लौटना पड़ेगा, 9 गेंदों से 16 बनाए, अच्छी पारी खेली और तेज तरार ये कैंपियो 172 पे 7वां गवाया है 17.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद, और हर्ष वापस लौट रहे हैं डगआउट की ओर। और देखना होगा, बिलाल पांड्या टीम का हिस्सा है आज, और आखिरी कुछ ओवर्स बचे हैं। हालांकि इस ओवर में 2 गेंदें और उसके बाद अंतिम 2 ओवर, तो कुल मिलाकर अभी भी 14 गेंदों का आना बाकी, और उनमें क्षमता है अंतिम ओवर्स में बड़े स्ट्रोक की। कहीं ना कहीं लक्ष्य जो है वो 190 के पार दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की अभी तक बल्लेबाजी हुई है हर्ष, हालांकि अतिरिक्त उछाल था, वो पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए, वो टॉप एज लगा और खुद आकर के सबकत सलीम मीर ने यह कैच लपका। जी हाँ, और विकेट मिलता हुआ सलीम मीर को। अंततः ये विकेट उनके खाते में 7वां विकेट, और पहला विकेट 1.4 ओवर में 19 रन देकर के, एक विकेट 172 पे 7, 17.4, समर 27 पे नाबाद 19 गेंदों से। और नए बल्लेबाज बिलाल पांड्या, जे के सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस, 2025 वर्ष 15वां मुकाबला। और इस 15वें मुकाबले में कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अल समद क्रिकेट क्लब की ओर से पहला मुकाबला खेल रहे हैं इस प्रतियोगिता में बिलाल पांड्या, और देखना होगा किस प्रकार का प्रदर्शन रहेगा। हालांकि आखिरी अभी 14 गेंदों का आना बाकी, 2 गेंदें इस ओवर में बची हैं। सामने बिलाल पांड्या 172 पे 7, 18वें ओवर में रन संख्या समझ की, पर एक अच्छा लक्ष्य, एक बेहतरीन लक्ष्य खड़ा कर दिया है अभी तक। हालांकि अभी भी 14 गेंदों का आना बाकी, और इस ओवर में अब तक अगर जिक्र करें 1, 6, 7, 4, 11 रन आ चुके हैं, विकेट भी आ चुके हैं। पांड्या सामने, सलीम मीर अगली गेंद लेकर के बिलाल पांड्या के लिए, और पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक, खूबसूरती के साथ गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए ये चौका। और शुरुआत बिलाल पांड्या की इस चौके से खाता खोल लिया, 4 पर पहुंच के रन संख्या पहुंचा दिया अलसमद के 176। आक्रमण की आवश्यकता अंतिम ओवर्स में, बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी यहां से। इस समय 176 तक टीम पहुंच चुकी है। अगली गेंद लेकर के सलीम चले, इस बार ऑन साइड में, एक बार फिर पीछे फील्डर तैनात, पर रन केवल एक ही मिलेगा, दूसरे की मांग है पर वापस लौटना पड़ेगा सुरक्षित। 1 रन और खाते में 177, और अब तक 40 रन जोड़ चुके हैं 3 ओवर में, क्योंकि 15 ओवर की अगर हम बात करें तो 137 15 ओवर में, और यहां 18 ओवर में 177, 40 रन आए पिछले 3 ओवर में। Pendulum is swinging wildly to and fro, back and forth. The game of ups and downs, ebbs and flows. 177 for 7. At the start of the innings, it was all about Al Samad. In the middle overs, there was a wonderful spell from Wasim and his counterpart, Gawar Rashid, and they did bowl in the right areas, chipped in with 5 wickets, sharing those wickets in between and putting Al Samad under the pump at the fag end now. When they need to top the tempo, they are going after the bowlers, firing on all cylinders. They are showing their aggression, intent and power of their arms, scoring runs 177 for 7. The 19th over is coming up. The first ball, that helicopter shot comes into play again, is gonna scamper through for 178 for 7. 11 balls remaining. Gawar to continue. He has picked up 2 wickets, gone for 10 into his 4th over.
with ball has shown that how capable he is. He can be dangerous with the ball. He can be game changer at times. But now Global Dadoo Titans need to restrict them below 200 mark. What Summer is going to do now? He's limping. Low full toss. Eyeing a Yorker. But he keeps it away. Keeps it out. Well played. Nicely done. One more run added. 179 for 7. 10 balls remaining. The two men in the middle need to take that responsibility to finish around 190. Will they find themselves around that? It's 179 for 7. Bilal on 6 of 3. Bilal won't be easy to hit Gawar, but he can use that pace of Gawar Rashid right now. What can Bilal do now? 179. Deep in crease. Clean bowled. It is knocked him over. And Bilal's little stay comes to an end. He faced 4 balls for his hot for 6. He's walking back to pavilion. It's the verve and vim for bowler. He has the last laugh. He has taken that leaf out of his book. Take a look again. Look, Bilal thought that it's gonna rise. It's gonna come at a good height, but ball once again dropped as he was waiting for that half tracker or the one that would have been around that waist height. But it kept low. Take a look again. What Bilal tried to do. Look, he was waiting for that half tracker kind of a one, but it kept too low on that occasion. He needed to bend his knees. Miscalculated that one and is undone. And it is the bowler who has the last laugh. He removed the dangerman Bilal Pandya. They're 8 down, 179. Mohit comes in now. Is it Mohit or someone else? If we look at his jersey, it's displaying as Mohit. And let's confirm from our scorer. Who's that? Number 10. As they're 8 down, Summer is still there. He's limping. He's a wounded line. But he's still going strong. That is showing his commitment and that athleticism of next level. He doesn't want to give up. He wants to fight it till the very last moment. They will try to get somewhere close to 190 mark. Are they going to touch that 200 figure today? It's Mohit Kanodia, right? His name is really Mohit. He walks in at number 10, 179. Mohit Kanodia to face the next one from Gawar Rashid, who's on cloud 9 at the moment. His tail is literally up. He has picked up 3 wickets. Mohit need to go big here. There is nothing to lose, everything to achieve. As Al Samad need to finish around 190. Are they going to look forward? What Mohit is going to do on this one? Here comes Gawar Rashid. Flicked away, round the corner. Will pick up one. That will bring the danger man, the man who's got his eyes in. It's Samar Amin on strike. Onto 20 out of just 20 balls. They have 10 balls at their disposal. Samar need to fire right now. The crowd is on edge of their seats there. You can see that. They don't want to leave. They want to be part of that excitement, the joy and jubilation. Those fireworks. Which way and where is this one going? Gawar is an easy customer to deal. Samar, once again a good delivery from Gawar Rashid. He has been accurate today. Precise and precision is there. He's keeping it simple and tight. It is just like that. If batter misses, it's going to go on to hit the target. Look at that. He's going with the straighter ones and trying to hit it into that kind of a block hole. He's trying to block the batters and that bat speed. He's keeping it straight and is bowling at a good pace. The last one. Look how he's looking forward to this one. Trying to design that pattern of field. Someone is asked to stay around the backward a point. Here is the next one. Oh, that one. He variated this one. Nicely done on that occasion. He saw that Mohit is stepping bit leg side. He will try to open up upside. He's denied that one. Just a single. He was eyeing a big shot. He has to contend with 182 for 8. 6 balls are going to come. 10. We'll take them under above 190. Below that, we'll give bowlers that kind of a confidence that we kept them below 190. But as I earlier mentioned, that the game of ups and downs, it has been the one like that, because we saw first 7 overs, it was all about the batters. They were going all guns blazing and they set things ablaze. They set the center ablaze, but in the middle overs, it was Wasim Raza and Gawar who took that charge with the ball and pulling things back in some style, and
At once, it looked like that they were threatening, and everyone thought that they will keep them around 150, 160. Now look at, that's why cricket is changing its colors, and you can't say anything until the last ball is non-bowled. It's 182 for 8. Final over is gonna come. आखिरी ओवर 19 समाप्त 182 8 विकेट पे मोहित कनौजिया सामने सलीम मीर आखिरी ओवर लेकर के पहली डॉट गेंद इस ओवर की। यार ऐसे में मोहित कनौजिया को अब ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक समर अमीन को देनी होगी और वो तलाश में है कि एक सिंगल मिले और आखिरी के 4-5 गेंदें जो हैं वो बड़े प्रहार करें। सलीम मीर 2.1 ओवर 24 रन 1 विकेट 182 पे 8 19.1 मोहित सामने 2 पे 29 समर ने बनाया 21 गेंदों से। दूसरी गेंद इस ओवर के लेकर के ये पहली पारी का आखिरी ओवर। सलीम चले कनौजिया के लिए एक बार फिर ये डॉट गेंद पर दौड़ करके रन पूरा कर लिया। भाई के रूप में उपहार के रूप में ये रन मिल जाएगा। एक रन और खाते में 183 पे 8 19.2 ओवर की गेंदबाजी। अंतिम 4 गेंदें पहली पारी के आधार पर बची हैं अल समद क्रिकेट क्लब के लिए और 190 तक अवश्य पहुंचने का प्रयास होगा। पर समर आखिरी 4 गेंदों में कुछ बड़े प्रहार जरूर यहां करने का श्रेय प्राप्त करेंगे क्योंकि जानते हैं कि अंतिम ओवर में अगर आप 8-10 रन और जोड़ लेते हैं तो 192 193 एक बड़ा लक्ष्य और एक अतिरिक्त दबाव रहेगा जब आप दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। ग्लोबल डडू टाइटंस की बात करें 183 पे 19.2 समर सामने 29 पे ये गेंद तो इस बार समर को सीधे बल्ले से और उठा करके गेंद को सीधे स्टैंड्स में जा भेजा और एक और बेहतरीन स्ट्रोक। तो समर की ये क्षमता है, समर जानते हैं कि यहाँ अब आक्रमण करना जरूरी है, आवश्यकता है इन अंतिम ओवर्स में बड़े प्रहार की। निश्चित तौर पे वो 190 के आसपास पहुंचती हुई टीम रन संख्या एक खूबसूरत स्ट्रोक था और 189 तक संभवतः पहुंच चुकी है टीम। स्टैंड्स में ये गेंद गई थी, 6 मिले जरूर थे। 189 पे 8 और इस बार फिर घूम कर खेलने का प्रयास था, हालांकि इस बार रन तो नहीं मिला। 4 गेंदें 19.4 में 189 8 विकेट पे 2 गेंदों का आना बाकी पहली पारी में अल समद क्रिकेट क्लब के लिए। समर 35 मोहित कनौजिया 2 9.61 करंट रन रेट इस समय और इस ओवर में एक छक्का उसके अलावा एक बाई 7 रन आ चुके हैं। 4 गेंदों से 7 रन 189 पे 8। एक और डॉट गेंद लगातार मिश्रण कर रहे हैं गेंदबाजी में, चतुरता के साथ गेंदबाजी सलीम मीर की। निश्चित तौर पर यहाँ चकमा दिया। आखिरी गेंद का आना बाकी 19.5 189 8 विकेट पे अल समद क्रिकेट क्लब। The last ball is going to come. Here comes Salimi with the last one. Summer on strike. Missed out twice in an over. And that ball number 5, that was little surprising for bat. It was a head-high one. 189 for the final ball. Helicopter shot comes into play. There is going to be the man of fumble there. Is it going to trickle into the fence? We'll have to wait and watch. I don't think so. It's top or just inches inside the boundary. They finish on 191. 192 is going to be the target for Global Dadoo Titans. Once again, an uphill task in front of Global Dadoo Titans. We shall be back with the chase. Join us for that exciting chase this evening and late into the night. Till then, Assalamu alaikum. Fi amanillah.
Assalamu alaikum. 190 to get from 20 overs. Global Dadoo Titans up against Al Samad Cricket Club. Lively pictures, lovely scenes from iconic Bakshi Stadium on your screen right now. Team need to think outside the box to prevail in today's game. Global Dadoo Titans 192 to get from their allotted 20 overs. Al Samad in a kind of a hurdle there. And the two openers arrived. They're taking quick look of the surface. It's Sarshil Abbas and he's got his partner on the other side. Just pressing that surface and trying to check what kind of a surface it is. It's Irfan Mir joining Sarshil Abbas. The two openers. It's a right and left hand combination. The righty and the lefty. Huge job on their hands. Responsibility on their shoulders. Robbie's having a word with Al Samad camp there. He's having candid moments, conversation, pep talk is going on. Think tank is going to work on it and they're going to look into this one and introspect what needs to be done. How to keep Global Dadoo Titans away from the 192 mark. Few days back, Global Dadoo Titans 191 were chased down with ease by Hilvi Rajori. And today, they need 192 to prevail against the likes of Al Samad Cricket Club. Need to replicate, need to bounce back. Hurdle continues. I think captain and the teammates will be eagerly looking forward and going through that deep think tank. And the thought is going to be simple that we have to restrict the opponent side. Can they restrict? Or will batters find a way to get off to a flyer? And that's what they will be eyeing and looking straight away as they need to mammoth 192 from 20 overs. Crowd is still in and they're enjoying the game of cricket. They are very much there, eagerly waiting for inning number 2. Action is about to resume here. Time for resumption in the middle. Shahid Khan has got the new ball in his hand. The white cherry. Can he make batters dance to their tunes? What is in store? Join us on JK Sports Time Facebook, JK Sports Time YouTube, and Red FM JK YouTube. JK Super Cement Red Premier League Season 2 presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. The confidence is needed by Sarshil Abbas and his counterpart in the middle. Hilal, the captain upside, coloured, is warming up a bit, reflexing at the moment. Reflexes are going to be important. He's working on his foots at the moment. Practice is going on. On strike is going to be Irfan Mir. The left hand, he's got a name Lara in heart of stee. In this spot of the stee, across the valley, the province, the Kashmir province, call him Lara Irfan Mir. He's going to be on strike. Shahid Khan will operate. He's got the pace. He can move the ball both ways. Is it going to be enough moment on offer this evening under lights? The new ball is going to move surely and definitely. Ball will do something earlier on as it's the new one. It's the fresh one in his hand. On strike. He's getting ready. Umpire says, let's play. Here we are. Here we go. Shahid Khan leaves. And bowled that one. Worked away nicely. Square on the on. And he's off the mark straight away. It's Irfan Lar off the mark. Shahid Khan straight away warned by Balwinder Kumar. You're running onto the danger area, danger zone. Stay away from this portion and this area. Now Irfan is getting there. He's trying to press those areas where spikes are doing a little damage at the moment. This surface is going to look little slow. We have seen that it has developed a kind of pattern in second innings. The surface slows up a bit when the batting team second comes out to bat while chasing. Sometimes it keeps low, sometimes there is a turn and drift for the spinners and the pacers
make things tight at times. They have something that is going to keep batters on their toes, that's going to tease and annoy them. One without loss. That was a width on offer. Lures him into that drive. No connection, doesn't connect. It's a big miss. It is a big daylight between bat and the ball. One without loss in over number one. Sarshil and his partner having a word. I think Irfan is telling him that, we have to take the responsibility. We need a flyer and we need to be gutsy and cautious in the meantime. Cautious start. They need to take those precautions. And that one is high up in the air. Wicketkeeper is settling and Samar Amin makes no mistake without any hesitation. And Sarshil Abbas is gone for naught. Gone without scoring. Caught by wicketkeeper off the bowling of Shahid Khan. Shahid has his man as he chipped in with wicket number one. Sarshil Abbas. Another bad outing. Bangered in short. He was trying to bang him away. He was trying to pull that one away. And leading edge of the outer splice. Blown up in the air. And look at Shahid Khan telling his teammates that I'm the man who given you that much needed breakthrough straight away. Global Dadoo Titans with that early blow, early dent in chase. They're 1 for 1. That brings number 3. Not going to be easy this evening. Misread that delivery completely and handed his wicket, gifted his wicket in the end. Atharva Kale is in at number 3. Atharva, lot of responsibility on Atharva Kale this evening. Atharva has something special. He has shown that caliber over the past couple of days in the valley in different parts. And today is the game. And this is the platform where you have to prove your mettle. And as it is the must-win game for Global Dadoo Titans. And today's win will mean that they are still in the competition. They are still in the contention. 1 for 1 in first over. Atharva Kale is lucky. He gets away with that one. Wow, what a delivery from Shahid Khan again. He's not holding back. He's making the ball do the talk. And look, that one, it was so nice. And Atharva has no idea between the bat and the body. Gone through. The only thing that saved the batter, it was that drift. And it was that little bit drift and the deviation. Otherwise, he was a goner. And he was absolute goner. And he's lucky that he survives. He gets away with that one. He must be thanking divine forces and the surface here. Next one. Oh, quality shot. This time it's through. Into the sweeper cover boundary for 4. Irfan Mir breaking shackles and breaks that wall with that beautiful shot, driven handsomely. There was again outward moment. Oh, look at that elegance, beauty of a shot of the bat of Irfan, the left-hander, with that wonderful shot there. He obliged, opened the bat face. Isn't easy to break free, but that shot gone through the legs. The fielder there. It's 6 for 1. He's got the slip in place. Beautifully bowled. Nice comeback again. Hitting the deck hard. Makes the ball climb. Irfan was right behind, dropping his wrist and keeps it down. 6 for 1. We are done with over number 1. धन्यवाद. एक ओवर की गेंदबाजी और 6 रन बने हैं. 192 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए. और पहले ओवर में 6 पर विकेट सरशील अब्बास का गंवाया है टीम जीडी टाइटंस ने. इरफान मीर लारा 5 पे 3 गेंदों से और अथर्व काले नए बल्लेबाज. हालांकि एक बेहतर पारी इससे पूर्व वो खेल चुके हैं जीडी टाइटंस के लिए, पर उसी प्रकार की पारी की आवश्यकता यहां इस मैच में. बख्शी स्टेडियम ऐतिहासिक मैदान, जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल. अथवास विद कॉन्फिडेंस. और वो कॉन्फिडेंस यहां पर भी बल्लेबाजों को दिखाना होगा, वो आत्मविश्वास दिखाना होगा, क्योंकि एक
बड़ा दायित्व इसमें कंधों पर, और उस दायित्व को बखूबी निभाना होगा अथर्व काले और इरफान मीर को अपनी टीम जीडी टाइटंस के लिए, क्योंकि पिछले दोनों मुकाबलों में वो जीत की तलाश में है, पर ये तीसरा मुकाबला और यहां जीत अर्जित करनी अवश्य इस मैच में। नेवर की शुरुआत हर्ष यादव का इस्तेमाल, तेज गेंदबाज, पहली गेंद पर बड़ा प्रहार खूबसूरती के साथ, एक टिप्पे के बाद संभवतः गेंद सीमा रेखा से बाहर। पहली गेंद पर स्वागत यहां हर्ष यादव का, चौका बटोरा अथर्व ने, और अथर्व के बल्ले से निकलने वाला यह पहला चौका खूबसूरती के साथ, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। 4 रन, एक टिप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर पहुंची थी। 4 और खाते में, अथर्व 4 पे, और कुल रन संख्या 10 1 विकेट के नुकसान पे। ग्लोबल डाडू टाइटंस 192, यह है उनके सामने टारगेट लक्ष्य। और इस बार अतिरिक्त उछाल था, कंधे का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, हालांकि इस विकेट पे अगर देखा जाए तो कुछ गेंदें अतिरिक्त उछाल के साथ ऊपर आ रही हैं, कुछ गेंदें पड़ने के बाद नीचे रह रही हैं। वो असमंजस की स्थिति जरूर है बल्लेबाजों के लिए, और उस स्थिति को पढ़ना और इन परिस्थितियों में बल्लेबाजी करना, ये दायित्व है इन बल्लेबाजों पर। हर्ष यादव का इस्तेमाल, दूसरा ओवर यहां पारी का। अलसमद क्रिकेट क्लब की टीम इस समय गेंदबाजी करे, हर्ष का आज चयन हुआ है टीम में, तेज गेंदबाज हर्ष यादव, और इस बार पुल किया खूबसूरती के साथ, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए एक और चौका। गति का इस्तेमाल कर रहे हैं, और 2 चौके अब तक लगा चुके हैं हर्ष यादव के विरुद्ध समय बल्लेबाज अथर्व काले। हाँ, खूबसूरती के साथ, और जो उपेक्षा की थी बल्लेबाज ने, और उस हाइट पे गेंद उनके पास पहुंची, खूबसूरती के साथ ये पुल शॉट, 4 रन और बटोर लिए, और इस चौके के साथ रन संख्या 14 1 विकेट पे। दूसरा ओवर, अथर्व इस बार सम्मान दिया तिरछे आड़े बल्ले के साथ, अंतिम समय में बल्ले का मुंह खोलते हुए खेला जरूर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था 1 रन लेने का। यहां एक अच्छी और बेहतर सकारात्मक सोच के साथ आपको बल्लेबाजी करने की आवश्यकता, एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता, क्योंकि वो दायित्व है, उस दायित्व को निभाना जरूरी है। शुरुआत में आप सरशील अब्बास का विकेट गंवा चुके हैं, उसकी भरपाई जरूरी। यहाँ पे इरफान बेहतरीन बल्लेबाज है, पिछले मुकाबले में भी उन्होंने एक बेहतर पारी जरूर खेली थी, पर यहाँ इस महत्वपूर्ण मुकाबले में, क्योंकि जीडी टाइटंस के लिए काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है, यहां से जीत तलाश करनी अवश्य। इरफान 5 पे, अथर्व 9 पे, 15 पे 1, 9.65 रिक्वायर्ड रेट, और 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाया है टीम ने। हर्ष, इरफान मीर के लिए एक और खूबसूरत स्ट्रोक, पर पीछे फील्डर तैनात। बड़े आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी, और जब आप गेंद की मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करेंगे, यहाँ विकेट के मजाज को परखेंगे, गेंदबाज को पढ़ना होगा, और थोड़ा संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि एक पार्टनरशिप वो काफी जरूरी है इस समय इन 2 बल्लेबाजों को जीडी टाइटंस के लिए। 16 पे 1, आखिरी गेंद, दूसरा ओवर। हर्ष यादव 10 रन अपने पहले ओवर में अब तक खर्च कर चुके हैं 5 गेंदों से, और कोई खास प्रभाव अभी तक छोड़ा नहीं है अथर्व काले अथवा इरफान मीर पे। 16 पे 1, 1.5 ओवर की गेंदबाजी, अंतिम गेंद। और इस बार फुल लाइन की गेंद सामने, हालांकि अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करने का प्रयास सफल तो नहीं हुआ, पर रन संख्या में वृद्धि हुई नहीं। अंतिम गेंद पर रन नहीं आया। ओवर की हुई समाप्ति, 2 समाप्त, 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 9.78 रिक्वायर्ड रन रेट। इरफान लारा और अथर्व काले, ये नाबाद छोड़ी जीडी टाइटंस के लिए। अलसमद क्रिकेट क्लब के विरुद्ध 192 जो हम जिक्र कर रहे हैं, लक्ष्य मिला है इस मैच में। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। 15वां मुकाबला, दूसरी पारी, मात्र एक मुकाबला आज दिन रात्रि के इस मुकाबले में। पहले टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करते हुए अलसमद ने 191 रन बोर्ड पे लगाए हैं, 192, और अब तक 16 2 ओवर में 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से। खूबसूरत और शानदार आउटफील्ड, काफी तेज, बेहतरीन विकेट और बेहतरीन क्रिकेट इस समय इस प्रतियोगिता में सफलतापूर्वक यह प्रतियोगिता। और अभी भी इसके बाद अभी भी 4 अथवा 5 लीग मुकाबले बचे हैं अगर पूल्स की बात करें।
पूल ए और पूल बी को मिला करके 16 पे 1-2 के बाद नेवर की शुरुआत। एक बार फिर शाहिद खान, और शाहिद खान का पहला ओवर बहुत बढ़िया रहा था। अनुशासन और पैनापन उनकी गेंदबाजी में दिखा और पहले ही ओवर में उनने सरशील को चलता किया था। 1 ओवर 5 रन 1 विकेट, 2 के बाद 16। Irfan on 6, Atharva is on to 9. Irfan has a role to play. Likewise, Atharva has that huge responsibility on his nerves. Shahid will continue and captain is happy to persist with pace. And this one, there is a man, need to be quick, and he's quick equally to the task. One more run taken, it's 17 for 1. This is over number 3rd we are in. Shahid drawn the blood in first over. He picked up that important wicket of Sarshil Abbas, who gone without scoring. That was the early blow. And the two men in the middle, they're just trying to repair that. They're trying to overcome. They're trying to recover. And recovery is the only way to stay in the competition, in the contention. 192 won't be easy. They have to find a way and adjust here. Captain is designing the field for Shahid Khan, who's got that pace, who's got that terrific rhythm with the ball. Successful a bowler in the previous encounter, and today he's just trying to hit the right lines and lengths here. He has picked up already one. One of the opener is sent packing. A third one strike. Oh, look at that one. That one is through between point and cover. That's into the cover point boundary for 4. On to 21. Global Dadoo Titans chasing 191. That's a good shot. He controlled it. He checked his shot in the end. Look, it was a slower one. But to some extent, he checked his shot. Unable to keep that one down. But rising on that one, onto his toes, to cope up with the bounce of the ball. There was extra bounce on offer. That did surprise him for a while. But he's lucky he gets away with that one in the end. Gets 4 for that. Next one, Atharva is trying to break free. Now Atharva is showing that aggression. He's trying to show that intent with the bat as he's advancing down the track. He advanced on that occasion. And now he's shadow practicing. It was better to go with that flick shot onto the onside. Unable to keep that one away. No run taken. It's 21 for 1. Shahid Khan 1.3. He has to mend his lines at times. But look at that one. That is glorious. Like that of a tracer bullet punched. And in no time it races away. And fielders could only watch this one as it travels on its way. Traveled at a rapid pace. What a shot. Thumping one. Wow. And he's unleashed with that one. The power behind the shot telling us Atharva Kale can hit the ball hard like this. What a shot. Fearless. They need to stitch a partnership here. 25 for 1. They need to share a stand. That's important thing. The partnership is going to be important. That will keep their side in the hunt. 9 of 4 balls here. Required rate is 9.63. Good delivery again coming into the batter. He works it away nicely, showing that technique. And the caliber is also there. But the technique of Atharva is of next level. He has something special. And he's another typical subcontinental wristy batter. On that occasion, you can see, and on your screen, you have seen that already. And it was just like that spring in his wrist. Wow. Quick wrist there, and wristy one keeps it away. One more run taken, 26 for 1. Irfan is going to face the next one, the local lad here. He has played a lot of cricket alongside Shahid. Oh, knocked him over. It's wicket number 2 down, and look at the celebration from Samar Amin behind the sticks and behind the stumps. And that one comes into the left hand. Irfan Mir is surprised. It's wicket number 2 down, castled. And Shahid Khan is once again among the wickets. Inward moment was there. And Irfan, even Atharva Kale, hands on his head. Irfan is undone on that occasion. So they are 2 down. Another one bites the dust. And this one, it was more important. You know that Irfan, when he gets going, when he's on song, then it's hard to stop the flow of bat. His strike rate is still 116. And it was better strike rate.
116 above 100, telling us that how crucial this wicket was and how important it is. That brings Imtiaz lefty. Comes at number 4. Global Dadoo Titans in a desperate need of a partnership. This is the game of ups and downs. In a hurdle again. Finding those voices again. And Shahid Khan is breathing fire with the ball. He has picked up 2 of them. Both openers sent packing. Second one to go. The latest casualty for Global Dadoo Titans. That was Irfan Mir, and is a delight. It is a simply delight and jubilation for the bowling unit. Requiring 192. They cut short it to some extent by scoring 26. But the required rate is going to be concerned all the time. It's shade below 10 and over. It's largely looming over there. The dugout is looking concerned at the moment. Why not tensed at the moment? The sadness which is largely looming on their dugout. Nothing gone right way. Things are not working for batting unit. They lost 2 wickets early again here. 3 overs. It was a kind of a flyer. But the 2 wickets tilted it Al Samad way again. And Al Samad finding a way to be back into this one. Harshado is having a word with Mohit Kanodia. Looks like they're going to go with a spin here. They're going to try an over from spin. We'll see how the ball will behave under lights this evening here at this beautiful sports field. It's hosting JK Super Cement Red Premier League Season 2nd. Presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. Pressure is going to be on batting unit. The Dio will be under pump here. Cage it for a while. Need to find answers. They fresh over first ball. That's high up in the air. Is he in danger? Is he in danger? No way. He's safe. He's fine there. That's gone all the way for a maximum. Atharva Kale. He's going to play shots with that. Oh, wonderful. Knelt down on one knee. Planted his left foot outside the line. Getting in position. The nice adjustment with the flow of the bat and ball flies. Gone the distance he needed. Mohit Kanodia will have to mend his lines here. He has to come up with something special now. Find a way to unsettle Atharva, who's look good at the moment. The intentions are quite clear. He has made his intentions clear here this evening. That I will play my shots. 2 for 32. We're into the 4th over. The first ball gone for runs. Mohit Kanodia has got fly slip in place. Ishtiaq Robi with that experience. He's at cover area. A catching cover for Atharva Kale. Anything loose, anything miscue, he's there to pounce on it. He's got other 3 fielders on upside. That one again in the zone. Gonna be runs, and this time it's gone way behind. Almost 15 rows on that portion for a maximum. Good foot movement again. And unleashed with that lusty blow. Half track, over pitched one. Not learning the lesson. And Atharva is there to dispatch it. 38 for 2. Goes for the sweep this time. Will find a single. There is Harsh. It's 39 on the board. Keep going. Look forward. Look ahead. Don't look behind. What just gone past, that's history now. What's going at the moment, that's the positive. What remains to be seen, that's gonna come in the coming goes. That's going to be the future. And make it bright by keeping wickets intact
and stitch a partnership here. Oh, this could be tight one. Could be tight one. And up goes the finger. Imtiaz lefty is gone here. Ups and downs. If you are asked to explain the ups and downs against the run-up play, he's LBW to Mohit Kanodia. He's gonna celebrate it. Left arm spinner against left hand. Pretty close one. And he was right in front. Plum LBW. And look at the celebration. He's looking on that portion, but the dugout is on this side. Well, Mohit Kanodia has something to celebrate and little smile back on his face after getting rid of Imtiaz lefty. The second one gone without scoring. No contribution with bat from Imtiaz this evening. Sarshil Abbas, two of the batters gone without scoring. It will put pressure on middle order, and rest of the batters, they are left with huge burden, lot of burden, and they need to anchor and shoulder that burden here. And the two men in the middle, the duo at the moment right now who are in the middle, they're left with no other choice. They need to build that partnership. Resurrection is important. Partnership is another important aspect of the game. Now the bowlers are getting something in between. Thank you very much. Mohammad Umar is there. Well, I was talking about that. Bowlers are finding under light something special, especially the spinners. The left arm spinners are unplayable at times. We've seen the Yash Garg, the highest wicket taker in the tournament, picking up 14. Now Mohit Kanodia, can he weave that kind of a magic and web with the ball? Is he going to test the batters here? Against right-hander, we saw that Atharva getting two magnanimous hits, and he belted twice him out of the center. But against the left-hander, he removed. Against the run-up play, Imtiaz lefty sent him packing without scoring anything. Two of the batters gone without scoring. That burden is going to be on the rest of the batters. 39 पे 3 4 ओवर की गेंदबाजी JK Super Cement Red Premier League second edition 2025 presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. 39 पे 3 मोहित कनोजिया का ये ओवर खर्चीला जरूर गया, दो छक्के आए पर विकेट जरूर मिला यहां पर टीम को। दर्दिश गोनी नए बल्लेबाज। और यहां जो हम हमेशा बात करते हैं, जिक्र करते हैं कि पार्टनरशिप काफी महत्वपूर्ण है। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से आपने 40 बनाए हैं 3 विकेट पे, पर अथर्व की पारी देखने लायक और निश्चित तौर पे उनका योगदान काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ये समय के साथ साथ प्रतियोगिता के अंत में कमाल जरूर होगा, पर यहां कमाल करना जरूरी अथर्वा और दर्दिश को, क्योंकि इसके बाद बल्लेबाजी आपके पास है। आकिब ज्यादा टीम के पास जरूर हैं, कुछ अन्य दीगर बल्लेबाज हैं, पर मध्य क्रम पे दबाव जरूर होगा, क्योंकि 3 विकेट शुरुआत में सरशील अब्बास, इम्तियाज लेफ्टी, इरफान लारा आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। 3 विकेट अभी तक उगाए हैं टीम ने। अच्छी गेंद थी और शाहिद खान ने बहुत बेहतर गेंदबाजी की है। अब तक अपने 2 ओवर में 15 रन देकर के 2 विकेट, ये उनका तीसरा ओवर। पांचवा ओवर पारी का प्रारंभ कर चुके हैं दर्दिश गोनी। 1 पे अथर्व काले, 31 पे, और अथर्व सामने होंगे शाहिद खान के। 41 3 विकेट पे 5वें ओवर की गेंदबाजी। दूधिया प्रकाश में नहाया हुआ ये मैदान, ऐतिहासिक बख्शिश स्टेडियम श्रीनगर। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन का नेतृत्व करता हुआ ऐसे में अच्छे खासी मात्रा में दर्शक यहाँ अतिरिक्त चाल, उस गति का इस्तेमाल किया था और किनारा लेती हुई गेंद सीधे वहां फील्डर के पास, और शाहिद खान को मिलने वाली एक और सफलता। ये चौथा विकेट गंवाया है यहाँ टीम ने। लगातार एक के बाद एक विकेट, लगातार अंतराल पे विकेट गंवाती चली जा रही है इस समय टीम। जीडी टाइटंस, ग्लोबल डडू टाइटंस दबाव में कंधे का इस्तेमाल किया था, अतिरिक्त उछाल थे और उसको सिर्फ गति का इस्तेमाल किया था, पर पीछे फील्डर थर्ड मैन पोजीशन पे उन्होंने कोई गलती नहीं की और कैच थमा दिया यहां बल्लेबाज दर्दिश अथवा अथर्व ने। ये देखना होगा अथर्व काले।
और सीधे फील्डर को थमा दिया और खुश नहीं है अपने स्ट्रोक से क्योंकि उन्हें दिशा दे दी थी पर पीछे फील्डर तैनात थे सीधे उनके हाथ में। ये चौथा विकेट 41 पे 4.2 के बाद। आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है। 41 पे 4, 15 गेंदों से 31 बनाए अथवरा काले ने। सुनील कुमार ने कैच किया शाहिद खान की गेंद पर। बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे पर यहां विकेट गवाया अथर्व ने। वसीम रजा एक और टैलेंटेड खिलाड़ी, एक और अनुभवी खिलाड़ी, पर दबाव साफ नजर आता हुआ क्योंकि सामने आपके 4 प्रमुख हथियार इस समय डगआउट में नजारा करते इस मैच का। सरशील अब्बास, इम्तियाज लेफ्टी, इरफान लारा, अथर्व काले, 4 बड़े नाम। शाहिद खान ने क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, 2.2 ओवर में 16 रन देकर के और 3 विकेट प्राप्त किए हैं और वापस भेजा है। योगदान उनका बहुत ही बेहतरीन। बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया है अब तक इस गेंदबाज ने। ओके 16 रन देकर के 3 विकेट। आपके टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज एक गेंदबाज के हत्थे चढ़े हैं तो फिर ये कमाल है इस गेंदबाज का। अगली गेंद लेकर के वसीम रजा सामने। आसान नहीं है, उनके बाद गैप में गई है गेंद। उस ओर फील्डर आ रहे हैं और जब तक अमान अलवी गेंद को फील्ड करते, सिंगल लेने का प्रयास था, 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई ग्लोबल डाडू टाइटंस ये तीसरा मैच उनका। अगर इस पूल की बात करें, ग्लोबल डाडू टाइटंस, अल समद क्रिकेट क्लब, यूनाइटेड इंपोर्ट्स, हिलव्यू राजौरी और सुल्तान वॉरियर्स समर बुक, संभवतः द रियल सुल्तान समर बुक। इस पूल से पूल बी में, पूल ए की बात करें तो रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब, सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला, अथवास इंडिया 11, स्पेक्ट्रम किंग्स और सोपोर स्टैलियंस। स्टैलियंस से एक ही मुकाबला अभी तक खेला है, उसमें जीत अर्जित की है और कल होगा उनका दूसरा मुकाबला। 42, 4 विकेट पे 5वें ओवर की गेंदबाजी। लंबा बॉलिंग रनअप है इस गेंदबाज का और एक बार फिर गति का इस्तेमाल जरूर, पर दिशा और लंबाई पे नियंत्रण नहीं। वाइड का इशारा अंपायर बलविंद्र कुमार का। 1 रन और खाते में अतिरिक्त की सूरत में, पर रन संख्या में वृद्धि। 43 पे 4, 5वें ओवर की गेंदबाजी। साझेदारी अवश्य यहां दर्दिश और वसीम राजा को निभानी कि उसके बाद आदिल दादा बचे हैं और कुछ अन्य दीगर बल्लेबाज है, पर दबाव पूरी तरह से 192 तक पहुंचना है। 9.61 रिकॉर्ड रन रेट वर्तमान में। ये स्ट्रोक बेहतर है, ये कमाल का स्ट्रोक है, सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए दर्दीश के बल्ले से और गेंद बल्ले से टकराने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 और खाते में शाहिद खान के विरुद्ध ये चौका दर्दीश का बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, शानदार नजाकत और ताकत इस स्ट्रोक में। 4 और 47 रन संख्या इस समय। ग्लोबल डाडू टाइटंस पर 4 विकेट खोए जरूर है। 5वें ओवर में गेंदबाजी। इस समय अभी भी आपके पास लंबा सफर तय करना है या अनुशासन और पैनापन गेंदबाजी में दिखाना होगा और विकेट लगातार अंतराल पे चटकने होंगे अल समद क्रिकेट क्लब को। शाहिद खान का ये तीसरा ओवर, आखिरी गेंद होगी। 22 रन देकर के 3 विकेट। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। 47 पे 4 या फिर गैप में, पर पीछे फील्डर, एक सिंगल मिल जाएगा। सुनील कुमार है सामने। अंतिम गेंद पर सिंगल, ओवर की होगी समाप्ति। 5 के बाद 48 पे 4 ग्लोबल डाडू टाइटंस क्रिकेट क्लब। Well, thank you, Nazir. 48 for 4 after 5 overs. Tied 5 overs. We saw runs flowing, but on the other side, 4 wickets going down. 4 quality batters losing their shape, and Atharva Kale was surprised with that silver bouncer by Shahid Khan, and that was the 3rd one for Shahid this evening.
48 for the loss of 4 after 5 overs. Over number 6 is about to start. That's going to be the last over of mandatory power play. Raza and Dardish in the middle. Raza trying to ease up nerves of Dardish. Raza knows that he has to keep other batter around him. He has to give him that kind of company so that Raza can score runs at free will. And if Dardish stays there, that will provide a space, Raza, where he can also fit in and score runs for his team. As Global Dadoo Titans are left with no other option, as I earlier mentioned it, I'm repeating these words quite often. It's a must-win game. He'll be winning 2, and they have 4 points. And if they lose this one, they won't have any point on the points table with just a game to go. At 2 points can only keep you in the hunt in the tournament. If one team loses 4 on the trot, then that net run rate will keep you alive with just a victory. 48 for 4. Mohit Kanodia has picked up 1. That is a good shot again. Into the extra cover boundary. Aerial he goes, gets 4 for that. That brings a 50 for Global Dadoo Titans. A boundary that he needed. Will it boost his confidence? On to 11. Dardish Goni. He's look good there. Anything in his radar, anything in his arc, he will pounce like they're a predator on the prowl. 4 for 52. Kanoja. What can he do now? Taken for a boundary. Next one is clipped away. Sensible cricket from batter there. Sensibly done. Worked away nicely. JK Super Cement Red Premier League Season 2. Presented by Athwas. Retail Athwas with confidence. That confidence level needs to be higher and higher at the moment. Raza and Dardish. The two men with a responsibility. Their side is in desperate need of a victory here. Al-Samad, if they manage to win this one, they will also cement their position to great extent. Al-Samad is looking forward to this event, which is going to be the biggest in the valley. Here is the next one. Could be tight again. Got to be hurry. Running between the wickets is important, and he's running between the wickets. It has been good between Dardish and Wasim Raza. They're good at running between the wickets. They're so agile and fit, quick between the wickets. Talking about those 22 yards. Kanoja in his second over conceded 20, but picking up that important wicket. Vital one for his team. Now the ball is doing something there. There is some purchase. Something that will keep bowler interested, and he's going to show that interest in it. A single taken there. 55 for 4. Raza and Dardish. The partnership is what they're looking for at the moment, but the bowlers are not giving anything away. They're not providing that kind of line and length, or the offering those freebies. There is nothing on offer. It's a dot to finish the power play. 7 of it, or 7 from it. 6 gone. 4 for 55. Required rate is still in control. It's still 9.79 in over. The concerned faces, sad moments, sad faces there, tensed, concerned. Few of them looking down and out. And if we look at Wasim Raza's face, there is a kind of grim. Raza, the former domestic player of Valley, but is unable to understand what to do right now. There is another change in the bowling department. Captain is rotating his bowlers here properly. He's doing that in a good fashion, proper manner. Going with different options. He has plenty of options this evening. Ishtiaq Robi having a word with
the new one who's going to operate now, telling him that keep it simple, don't experiment. It is Sunil Kumar. Robbie brings in that experience. He's very much experienced among the pack, and that will surely come into play. That will benefit the Ultimate side, setting 192 for Global Dadoos. They already lost 4 wickets there. Straight to 1. Wanted second, won't get. Fielder at long on is agile, quickly onto the ball and denied that second run. It is Shahid Khan who's picked up 3 wickets. Looking in good colours this evening. Picked it 3 and 1. That was the interesting one. The wicket of Atharva Kale was scoring at a good pace. The only batter who shown that aggression of highest caliber. Dig out nicely. Sunil Kumar is in search of a wicket here. It looks like that he's keeping it simple and straight. He fired it into the left hand who digs it out nicely and is trying to follow the bat, and that's the important thing. Showing the bowler has that ability. He has got that capacity and capability. Cuts it and cuts well. Fine there. Man around the sweeper cover area will do the mop up with ease. 58 for 4. I'm a lefty who does mop up in time, and Mohit Kanoja is delighted after conceding a couple of runs at the boundaries in that over, but the next over given him something that was enough, and that was something that brought him to lie. Oh, there is a fumble. Will it run down? Will it trickle into the boundary? I don't think so. Puts in a die. Adil Gultan is quick fielder. He's the quickest one. When it comes to the outfield, he's going to remain there from ball 1 till the very last end, and captain knows his capacity, his ability. Puts in a die. What could have been a boundary, and he limits the scoring down to 2 even. He parried it for a while. Bounced it back quickly in the second attempt. Saved that one and didn't let it trickle into the fence. The next one, little uppish, but in the gap again. Is he going to look for the second? Won't get that as Robbie is quickly onto the ball. Sunil Kumar in his very first over. He's look okay. He's look fine at the moment. Not going for runs. Just singles coming and a solitary double in this over. There is a long on in place. Long off is already stationed there. Mid wicket and scare leg in place. Captain unable to pick that one up. Not a clean stop. Yielded a single up the final ball. 7 done. They are 4 for 62. Raza having a word with Sunil Kumar. I think Sunil knows him. He has played cricket alongside Raza. As Raza has been the domestic level player. He has played that cricket for Jammu and Kashmir. Look how he captured that one in the play, not letting the ball trickle into the boundary. Saved 2 runs, and these runs will help the side, saving 1s and 2s. And there are a couple of teams across the globe who win plenty of matches because of their field by saving 15-20 odd runs every day, and that is giving them and their bowlers extra bit of cushion. Not just the cushion, but we have seen that on numerous occasions, it proved to be enough because of that field they possess. They have had in their teams, the spirit they brought in. They likewise, Al-Samad is trying to do that this evening here. And the way the fielders are backing the bowlers, converting boundaries into doubles, not letting them chip in with 4s here and there. That's keeping their hopes alive, and that is provoking batters to go hard and go for the big shot. In that process, sometimes batters may lose that shape, and they had the boundary riders to cope up. The asking rate gone up to 10 now. Call is for 2 this time. Aman is quick, and he ended up the chance of the second one. So just a single there.
on offer for Dardish. Dardish batting on 17 now. Raza, the left-hander, is yet to open up a bit. He's yet to use that extension of arms. I think he's waiting for that odd one or the bad one where he could capitalize, where he's going to cash on. Aman Alvi, one more option for captain, and he's brought him on here. He's going to try with most of the options he's having this evening, and that one, it's a wavered one. And gonna be gifted runs, 5 of them, 5 wides. And he fired it away from Wasim Raza. Bowler is trying to keep it away so that batter won't get a space and the time to adjust and hit it. On the other side, it was way away from that marker and the trim line. Unable to control it. Can't hold its line tight and together. So it goes past. Summer did well to some extent, trying to recover and trying to stop the ball. That was fired away from that marker. 68 for 4. Could be tight again. Got to be hurry. Running between the wickets is the important aspect. It's pivotal when you rotate, when you look for ones and doubles. That will relieve that pressure. And already this over, we have seen those 5 wides coming. That is going to relieve that amount of pressure. And it did to some extent. Now the batters have that freedom for a while, that we got 7 already of just 2 balls. And with that single, it's going to be 8th run in a space of 3 balls. Takes it to 69 for the loss of 4. 70 for the loss of 4. They are 122 runs behind from 12.3 balls as we are in 8th over. Beaten on that occasion. Lucky he gets away with that one. That one didn't found an edge. No one in slip cordon. There is a short third and backward a point. That was interesting one. That's the reason the extra bounce and that drift along with turn is trying to keep it. Oh, look at that one. Missed by a whisker. And this time there was no drift. There was a turn after pitching around that outside of it. Then it turned back into the left hander. Raza is so lucky he gets away with it in the end. Beautifully bowled again. Little shout, turn down, 8 gone. Another tight over comes to an end. Just 8 from it. They're 70, chasing 192. Long way to go with 6 wickets in hand. And the asking rate is gone up to 10.17. It's climbing, it's going upwards, it's mounting. 8 of this, still it's mounting, it's going upwards. Now the 2 men in the middle, the duo, it's up to the 2 men to introspect how to balance between the current and the required rate. They need to overcome this, find some runs in between. They need one big over here to fire it and bring themselves back on track. The ebbs and flows, the excitement of JK Super Cement Red Premier League is at next level. And the games here, we have seen that the first inning, we are watching and we have gone through plenty of games where we saw that 200, 190, 170 plus being scored. In the second innings, it changes drastically. And asking the batters, apply yourselves, show that caliber with application of next level, or to prove your mettle, step up, sweat it out, ruffle your feathers, and be the one that lies inside you. Show it here. 71 for 4. This is over number 9 we are in, and Sunil is gonna continue, and captain is pretty happy. He knows that he has that knack. He can weave that web. Is he gonna use that twist and twirl with the ball? That remains to be seen. 71 पे 4 सुनील कुमार और खूबसूरती के साथ 1 रन दौड़ पड़े दूसरे के लिए। दोनों बल्लेबाज दूसरा भी पूरा किया और अब तीसरे की मांग है और यहाँ तीसरा रन भी पूरा कर लिया। वसीम रजा की ये क्षमता है। 10 पर पहुंच गए 11 गेंदों से। 74 पे 4 9वें ओवर में सुनील कुमार के विरुद्ध
कुछ बड़े प्रहार करने होंगे, यहाँ से रन गति को बढ़ाना होगा क्योंकि 10.11 और ये रिक्वायर्ड रन रेट जब 11-12 तक पहुंच जाएगा फिर आसान परिस्थितियां रहती नहीं है क्योंकि एक अतिरिक्त दबाव आ जाएगा बल्लेबाजों पर अच्छा प्रदर्शन रहा है अब तक गेंदबाजों का, जहां तक अल समद की बात करें, खासकर स्पिन गेंदबाजों ने बहुत ही बेहतर तरीके से रनगति को रोका जरूर है। एक और डॉट गेंद यहाँ पे पढ़ने के बाद नीचे रहती है ऑफ स्टंप की ओर, हल्का सा कोण बना रही थी गेंद, विकेट कीपर के पास दर्दिश सामने 19 पे 16 के 2 से, और वसीम रजा ने 10 रन बनाए 74 पे 4, 9वां ओवर, अभी भी 11 ओवर इसके बाद आने बाकी। अच्छा शॉट है पर पीछे फील्डर बिलाल पांड्या, सीधा थ्रो स्टंप्स पे पर सुरक्षित क्रीज में, एक रन जरूर, एक रन के साथ 75 क्या यहाँ तीसरे अंपायर को रेफर किया गया है, और डायरेक्ट हिट स्टंप्स पे बिलाल पांड्या का, और देखना होगा क्या सुरक्षित क्रीज पे पहुंच चुके थे अथवा नहीं, ये देखने वाली बात हो गई। अभी भी तीसरे अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा, पर अच्छा थ्रो, बेहतर थ्रो बिलाल पांड्या का, प्रतीक्षा की जा रही है। और अभी भी देखना होगा, और सुरक्षित क्रीज में नॉट आउट करार दिए गए थर्ड अंपायर द्वारा। धरतीश गोनी पर बेहतर फील्डिंग और सीधा थ्रो स्टंप्स पे बिलाल पांड्या का, 74 पे 4, 8.3 के बाद धरतीश 19-16 के 2 से, वसीम रजा 10 पे, अंदर आ रही थी गेंद, कट किया, दौड़ पड़े सिंगल के लिए, एक रन और खाते में, रनिंग बिटवीन द विकेट बढ़िया रही है अब तक दर्देश और उनके साथी वसीम रजा की, 75 से बढ़कर 76 पे 4, आखिरी गेंद का आना बाकी, और इस ओवर में 6 रन आए अभी तक 5 के 2 से। अच्छा ओवर एक और सुनील का, भारत के स्पिन गेंदबाजों ने अच्छा जाल अभी तक बुना है क्योंकि रन गति पे अंकुश लगा जरूर है, और 10.39 तक रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका है। आखिरी गेंद सामने खेला सीधे बल्ले से, पीछे फील्डर तैनात हैं, एक रन जरूर मिलेगा पलट के दूसरे रन के लिए, और दूसरा रन भी 2 रन और खाते में, अंतिम गेंद पर 2 और 9 समाप्त 78 पे 4, यह रन संख्या ग्लोबल डडू टाइटंस की, क्योंकि 192 तक पहुंचना है, 78 बना लिए हैं, अभी भी 114 रनों की आवश्यकता और 66 मात्र गेंदें बची हैं। Couple of runs saved by Bilal there. Sunil is indebted to that, and looking at his response, the way he responded, telling him that you've done well. Go through this picture again and look at the faces there. Tensed moments, sadness is largely looming there, is cornering this dugout as they are winless in the tournament. Will they find a way in today's one? Has to find a way to stay alive. Need 2 points, those 2 invaluable points to open their account on the points table. 4 down, 78 on the board. 11 overs are going to come, 66 balls. Required rate is 10.36 an over. Dardish and Vasi, one of them need to put their feet on accelerator. The other one just need to back him and keep backing him. Keep rotating and give him measure of strike. It's Wasim Raza who has to back Dardish and let Dardish unleash and excel so that he can come up with some big shots and knock that one we call the heroic with the bat. Is he going to do those heroics today and this evening here? As they need one big knock, one masterpiece with the bat. Aman to continue. Starts off with a wide. Not a good start to an over. You have to be on money. As he starts off with a wide, an extra ball is loading. Now he's trying to keep it away from Razazak. And Raza is so quick there. There is a shot for caught behind and Raza is walking. He's not going to look at Ravi Kumar Chaurasia. And in the meantime, finger goes up. It's gone up again. So wicket number 5 down. And Global Dadoo Titans, their ship is sinking further. One must come to the pressure. And the scoreboard pressure is always going to be there. It's going to remain in place. Look, he was trying to guide it, run it down to the third man. Nice Global. Good catch from Samar Amin. Not easy one.
but he does well in the end. So fifth one bites the dust. One more down. And Global Dodo Titans, now they're feeling the heat this evening. Raza telling the newcomer, at least try to settle down a bit. Look, Raza is pleading. Come on, I fail it, but it's your job now. It's your duty. He's gone 11 up 13, strike rate of 84. Wicketkeeper Summer took control of that. He didn't let Wasim walk away. And he captured that in gloves. That was a nice collection. Newman walks in at number 7. 79 for 5. Five down, 79 on the board. Short pause in play. Players getting a time to breathe free. It's a kind of breather in the middle. We too needed a breather here in the com box. 10.5 balls remaining. The equation is 65 balls, 113 to get. On your screen right now, go through this one again. The number of runs, 113. The number of balls remaining, 65. Wickets in hand, just 5. These are the sponsors of the event. And this is the title sponsor, JK Super Cement, Banai Mazboot Kashmir, Build Strong Kashmir. And take a look again. These are the sponsors of the tournament. And this event is presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. Time for drinks in the middle. We also needed a breather. Here we are. With a kind of break in the com box. We're going to sip in a little bit. चाय की चुस्कियां लेते हैं, मजा लेते हैं उस चीज का. And stay tuned, stay connected, don't go anywhere. Stay glued to your laptop screens and mobile phones. Back again. Aman Alvi. Right now he's holding the upper hand. He's in control, in charge. He removed a batter, namely Wasim Raza. Such a big batter with highly skillful character. He's sandpacking. Unable to show those characteristics in today's game. Whenever Raza is playing, there are huge expectations. Eyes are on Raza. Trying to guide it away. Ismail. Mohtisham, what a name he's got. Mohtisham. Aman Alvi. He's trying to weave that magic here. He's already done that. Ajishwan.
Ismail is lucky. Will it run past? It's gonna tease them. It's gonna tease them. Will it trickle? Oh, he's done well. Using his football skills there. He keeps it within the boundary line there. Does well. Save it. Couple of runs again. Shahid Khan does well using his boot to stop the ball. A routine check going on. The TV umpire is going to look into this one again. But look, had their slip been in place, would have been soft dismissal, but there wasn't slip in place. Just inside those boundary triangles, he stopped the ball. What? I think the two batters scamper through. The duo scamper through. They're going to check it again. Will they look into this one again? I don't think Dardish is satisfied with that call. Should be 1 or 3. 3 runs added on. Good running between the wickets and fielder save it just a single. That's why Dardish is on strike. It was Ismail. Dabs that one. Could be tied. Directed it is. Will this be sent upstairs? And he's back for the second. Good running between the wickets. It's referred again. Ravi Kumar Chaurasia now sends it to TV umpire. Look into this one. TV umpire has got a couple of monitors there. Couple of screens in front. He's gonna have a check. What it is. Direct hit. That was spot on shy from fielder there. Harsh Yadav is okay there, looks like, as they're getting ready to operate. Is he fine there? Is he okay? Oh, there is going to be little drama as bowler is trying to enter his bowling stride and Ravi Kumar telling him wait on. So he's okay there, is fine there, no problem at all. Oh, just in. Punched away. Will he beat the man? No way. He's going to look for the second. Good running between the wickets. Fielding has been up to the mark. In Global Dadoo Titans, that was lacking. There were a couple of mistakes in the field. And overall, it was a wonderful show from Al Samad in today's game. From very bird go, they decided to go downtown and this stand inside, as will save him here. We're halfway mark, halfway down, 10 down, 5 for 86, 106 behind from 10 overs. Won't be easy with just 5 wickets in kitty. Interesting and intriguing. Are we in for another crackerjack of the next passage of play, where we're gonna see those ups and downs? The way we saw in number 1, there were lots of ups and downs from over number 1 till over number 20. That is going to be, that remains to be seen, and everyone is going to look forward to that. Will we have something like that? 1 minute up, next minute down? I don't think so, because there is no resilience. The perseverance is missing, and that's lacking from Global Dadoo Titans. Someone need to step up, and nobody is ready to stand to the occasion and take that responsibility. Sunil begins the fresh over. First ball, it's aerial. Is he in danger? Is he in trouble? No, he gets away with that one in the end. No problem there. On the other side, there was a chance of a run out. Look, there were a couple of opportunities. A catch falling in between two men there, and the next opportunity there was a chance of a run out on the strike end. Both gone begging, and they pinch a brace. 2 inevitable runs, 104 behind. It is a long on mid wicket and scare leg. Guided nicely. Unable to go past to the man at point. It's cover point. There is the captain Hilal colored. Ishtiaq Robbie is yet to operate, and captain is yet to use Ishtiaq Robbie in today's game. He scored quick and brisk 30 plus.
Now, what remains to be seen, and all the listeners and viewers here, they want to see Ishtiaq Robi roll his wrist. When he's going to roll his wrist over the ball? Let's see what he has in store in today's encounter, in today's game, which is important for global Dadoo Titans. This time trying to fetch it, trying to sweep it. Little bounce and offer. That keeps that sweep shot out of equation. 57 balls, 103 behind. Now reversing his stance. Nothing is working at the moment, right now. All is going bowler's way. Need some big overs here. They're searching. Nothing. Getting nothing there, and that is a quality shot. A shot that you're going to love. And people will try to watch it again and again. Tonight, late into the night, they will try to entertain themselves with that classy shot. And he's a different batter with different stance. 6 more. Oh, glorious cover drive. And that's going to give him 6 more. The next one, swept. And swept hard. In no time, ball reaches to Guldan there. And Guldan has little time to respond. A single is all he's going to get. 96 behind from 54 balls. But it is a different batter, Dardish Goni. People try to use that extension of arms. He's closing his shoulders when he goes after anything. It's a totally different thing. You need to use that extension of arms. He has got that power. But he's closing those arms. Have you seen that he's trying to lock it? And that kind of a force and that push is generated with those wrists. And we'll ask him how you're able to do this. 96 behind from 54 balls. But he has been helpful. And he has been the man who impressed everyone here. And he has expressed himself on this podium at platform. The better thing and the best thing about this man, Dardish Goni, is in every situation, he tries to step up. The one boy who has shown those glimpses won't say that he's perfect, but to some extent he's just trying to attain those things, and he's trying to attain that perfectivity when it comes to that anchoring the innings, stabilizing it, and scoring those runs at free will. He has that ability, the capacity he has developed over the years. 9 ओवर और 96 रन जीत के लिए सुनील अथवा अमान अलवी का चयन। 2 ओवर 16 रन 1 विकेट। ये तीसरा ओवर उनका 96 पे 5-11.1 के बाद। दर्दिश अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की है। हर संभव प्रयास वो इस समय कर रहे हैं कि यहाँ जीत अर्जित की जाए। 96 बने, 96 और बनाने। आधा सफर तय कर लिया, आधा सफर और तय करना है। एक बार फिर ऑफ स्टंप पर गेंद को लपेट कर ऑन साइड में खूबसूरती के साथ गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 और मिलते हुए यहाँ पर, और 4 रनों के साथ रन संख्या 100। अमान अलवी के विरुद्ध ये दर्दिश का स्ट्रोक, बेहतर स्ट्रोक, पूरी ताकत के साथ बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इस बल्लेबाज। और ऐसी परिस्थिति में बल्लेबाजी की जहां पूरी तरह से दबाव में टीम थी। 4 विकेट गंवाए थे टीम ने। 100 पे 5, 11.2 के बाद 92 चाहिए 52 गेंदों से। अमान का तीसरा ओवर, दर्दिश 37 पे। उम्मीद की किरण जरूर गैप में गई है। गेंद पीछे फील्डर पर सिंगल मिल जाएगा गुलडान के पास। गेंद अच्छी बल्लेबाजी अब तक उन्होंने की है। एक सेंसिबल नॉक उन्होंने अभी तक खेला है अपनी टीम के लिए। और उनके साथ इस्माइल मोहतशम, युवा अनुभवी खिलाड़ी। सहयोग करना होगा। 6 पे नाबाद है। दूसरे छोर से कट करना चाहते थे, अंदरूनी भाग लिया गेंद ने। हिलाल कलर से हल्का सा फंबल, जब तक वह दूसरे प्रयास में गेंद को उठा करके थ्रो करते कीपर के पास। 1 रन और 101। धीरे धीरे से अब टीम उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास, हालांकि अभी काफी कठिनाइयों से गुजरना है। 89 और चाहिए, 50 की दुकान है बाकी। 5 गवाए हैं। यहां से एक विकेट की तलाश अल समद क्रिकेट क्लब को जीटी टाइटंस के विरुद्ध। और इस बार इस्माइल ने
ये पंख दिए हैं गेंद को परवाज के लिए और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए आक्रमण किया अमान अलवी के विरुद्ध और खूबसूरती के साथ सही समय पे यह कनेक्शन और सही तरीके से गेंद तक पहुंचे जरूर और 6 अर्जित किया अपने लिए अपनी टीम के लिए। अच्छा प्रदर्शन इस बल्लेबाज का। 14 पे पहुंच चुके हैं। 109 पे 5, 11.5 के बाद इस बार फिर स्टेप आउट करके बाहर निकले जरूर थे, पर वो ताकत नहीं थी स्ट्रोक के पीछे, ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए थे, अपने ही फॉलो थ्रो में फील्ड कर लिया। एक बार फिर गेंदबाज अमान अलवी ने ओवर की समाप्ति 3 में 29, 1 विकेट, 48 गेंदों से 83 रनों की आवश्यकता। 12 समाप्त, 109 पे 5। इस्माइल मोहतशम और दर्दिश गोनी। 38 दर्दिश ने, इस्माइल 14 पे। ये पार्टनरशिप काफी महत्वपूर्ण, सोच विचार जरूर। 8 ओवर में 83 रन चाहिए और 10.0 0.3 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं, क्योंकि अलसमत क्रिकेट क्लब की टीम को एक विकेट चाहिए और ग्लोबल डाडू टाइटंस को ये पार्टनरशिप और गहरी करनी होगी और बड़ी करनी होगी, क्योंकि ये पार्टनरशिप ही मात्र उपाय है जो आपको इस लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। आदिल दादा का भी आना बाकी। आपके पास बल्लेबाजी है पर कोशिश जरूर, और इस कोशिश में क्या सफल हो पाएंगे। 83 की आवश्यकता, 48 गेंदों से 109, 5 विकेट पे। 12 की समाप्ति, 10.38 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए। 14, 200 के स्ट्राइक रेट से इस्माइल और 28 से 38 दर्दिश गोनी। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। 15वां मुकाबला और दूसरी पारी 192 का लक्ष्य सामने, 109 पे 5। 12 समाप्त, 8 ओवर का खेल। नए ओवर की शुरुआत। हर्ष यादव को दूसरे स्पेल में 1 ओवर 10 रन उन्हें खर्चे थे, हटा लिया गया था और अब जाकर के उनका छोड़ भी बदला गया और इस छोड़ से उन्हें गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है नॉर्दर्न पवेलियन एंड से। पहली गेंद लेकर के हर्ष यादव। धरतीश के लिए खूबसूरत स्ट्रोक और पीछे फील्डर। 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग थी, हाँ ना केस दे थे और काफी आगे निकल चुके थे, लगभग बीचों बीच विकेट के पहुंच चुके थे और वापस लौटे सुरक्षित क्रीज में। और एक उपाय भी, एक ललचाओ भी वहां पर गेंदबाज फील्डर को। 82 चाहिए 47 से 110 पे 5। 12.1 ओवर की गेंदबाजी। ये पारी का 13वां ओवर इस समय। 14 पे 7 गेंदों से इस्माइल। 47 से 82। तेज गेंदबाज हर्ष यादव। यादव के लिए यह थोड़ा आक्रमण जरूरी है बल्लेबाजों का, क्योंकि 10.47 अभी भी रिकॉर्ड डंडे। यहाँ एक विकेट गिरा तो फिर कहानी में थोड़ा सा बदलाव जरूर आएगा। 111 पे 5 नेल्सन स्कोरबोर्ड पे। 111। 46, 81 आंकड़ा। 2 गेंदों से 2 रन हर्ष यादव का। ये दूसरा ओवर है और धरतीश गोनी 39 पे। वाइड का इशारा अथवा गेंद पैड से टकराई है, ये देखना होगा। अभी कोई निर्णय नहीं आया अंपायर का। अरे अभी भी रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 111 पे 5 और थर्ड अंपायर को संभवतः रेफर किया गया है। 111 पे 5, नो का इशारा, नो बॉल का इशारा आया वहां पे थर्ड अंपायर द्वारा और इस प्रकार से एक अतिरिक्त गेंद, एक अतिरिक्त रन। 112 पे 5। धरतीश गोनी 39 पे 30 गेंदों से इस्माइल मोहतशम 15, 8 गेंदों से। बेहतरीन क्रिकेट बख्शी स्टेडियम श्रीनगर। 80 रनों की आवश्यकता। स्ट्रोक बेहतर पर पीछे रॉबी। जब तक आकर के फील्ड का 3 लॉन्ग ऑफ क्षेत्र से दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल तो पूरा कर लिया।
एक रन और खाते में जोड़ लिया और अब एक रन के साथ रन संख्या 113 पे पहुंच चुकी है 5 विकेट पे 12.3 के बाद 45 से 79। दर्दिश और इस्माइल बीच मैदान में। हर्ष यादव का दूसरा ओवर और यहां पे आक्रमण की आवश्यकता है एक छोर से, क्योंकि अब कोशिश जरूर होगी दर्दिश को रन गति को गतिशीलता देने की, स्कोरबोर्ड को गतिशीलता देनी होगी, रन संख्या में बढ़ोतरी करनी जरूरी दर्दिश और उनके साथी खिलाड़ी को। ग्लोबल डडू टाइटंस 112। यहां लॉफ्ट किया है पर पीछे फील्डर फील्डिंग कमाल की थी, 6 वहां जरूर बचाए पर गेंद हाथ में लगने के बाद छिटकी और बाउंड्री पार चले गई। चौका जरूर मिला 4 और खाते में और 4 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई। कमाल का शॉट था पर इस बार इस्माइल के बल्ले से, और यहां पे प्रयास जरूर था शाहिद खान का पर वो असफल हुए और 4 जरूर मिले यहां पर बल्लेबाजों को। इस्माइल पहुंच गए 15 पे 8 गेंदों से, सब 19 पे 117 पे 5, 9 गेंदों से 19। 75 चाहिए 44 गेंदों से। इस गेंद पे रन नहीं आया, तेज गेंद थी, स्ट्रोक खेला जरूर, अंदरूनी भाग वही, हर रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 117 पे 5, 12.5। अंतिम गेंद का आना बाकी 43 से 75। ये इक्वेशन या आंकड़ा या कहानी में ट्विस्ट लाना है तो फिर बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता दर्दिश और इस्माइल को, और आवश्यकता भी है इस समय जीडी टाइटंस को। ऑन साइड में गति परिवर्तन, 1 रन पूरा किया वो मिल जाएगा। आखिरी गेंद पर 1 रन सुनील के पास, गेंद ओवर की हो गई समाप्ति। यहां 13 ओवर समाप्त, 118 पे 5, 42 से 74। Interesting passage of play. 7 overs are going to come, 5 wickets in hand. We can say that it's a chase on. It isn't over yet. And that's why this game is taking us through ups and downs. It's at times full of excitement. Sometimes it's going to taste you that agony. It teases you. It settles you. It makes you stronger. And these are called the crunchy moments in the game. It's a crunch situation for the 2 men in the middle and even for the bowling unit. Let's see which side will held their nerve and who's going to held their nerve. Time will tell us. Game of nerves. Game of ups and downs. Ebbs and flows. Here we can say that pendulum is swinging wildly to and fro. 74 to get. 7 overs remaining. 5 wickets intact. One big over will make it more interesting. The excitement is very high at the moment. These are going to be the moments to remember. 118 on the board. Ismail playing a cameo of his life. He's on to 20. Dardish, the season compare, batting on 40. Guided nicely, eyeing that gap. Is denied. He was just trying to go through that corridor there. The way he dabbed it with an angle blade, that was so nice. Showing Ismail is of huge character. He has that tenacious character. He has that tenacity. Look again, Saber 3 runs for his team. Twice in an over. The other one that gone down towards that gully area. There was a man to protect the ball. Now Shahid Khan savered. Absolute boundary here. And he saved 3 runs for his team. That was a good shot from Dardish Goni. 72 behind. Cut away nicely. And is denied any possibility of a single. That's a dot delivery. And it is a goal dust here. Important dot comes into play.
The interesting part, Ismail and Dardish, they are now searching boundaries here. They're searching runs. Shuffle across, trying to go big. And that one is going to roll past. Fortune favors the brave. Didn't connect it properly. Survives. 121 on the board. 38 balls, 71 to get. Is Dardish going to be the man this evening and tonight? What he will do now with the bat? They are 71 behind. Good delivery. Yokes him on that occasion. Mohit Kanoja did an appeal. Has he gone through that? What I did? How I blocked the bat flow of Dardish like batter? He was caught in two minds. Somehow he keeps it away. Oh, does well. Does well on that occasion somehow. Next one, that's aerial. That's in the air. Is he in danger? Is he in trouble? He is lucky to survive. That landed in no man's space. Two men were converging. None could make it to the ball. Tight over from Mohit Kanoja in no time. How he ran through this one? Well, everyone is surprised here. How he completed that over the tight one. Asking rate. Cross at 11.67 now. It's going to touch 12. They need 70 from 36 balls. What a game of cricket. The turnaround. It itself is a table turner. Look how the things are turning. How things are changing in the middle. Robbie is having a word. He is the senior colleague and the counterpart of other batters and bowlers. Talking about the unit of Al Samad. He's the senior colleague and counterpart in the lineup. Who will bowl now? Robbie, after having words with the teammates, he convinced captain, I think. Now he's going to go with Bilal Pandya here. Okay, because Bilal can bowl. Now Robbie has given the ball to Bilal Pandya. He's going to use Pandya here. He's going to put money on Pandya. What Pandya can do? Will he rise to the occasion here? As I earlier mentioned, this is the game of nervy moments. It's a nervous chase. It's a nervy chase underway. Anything can happen. 17 from 36 balls. Bit tough for the batting unit. They do have 5 wickets in kitty. Some of the big batters in the lineup to come. Salim Mir can launch big. Adil Dada can keep them in the hunt. Right now they got Ismail and Dardish in the middle. Bilal Pandya could only contribute 6 with the bat. Captain has given him ball after Robbie convinced Hilal Khalid, and Khalid having no other option, and there was no argument. He straight away said, "You choice, gonna go with the Samban here." Now Bilal will be little under pressure as he couldn't do something with the bat here. Now he has to do something with the ball, as this is going to be the crucial over to come. 70 away from 36 balls. Bilal begins the fresh over. First ball, batters in search of boundaries here. First ball, that's a good looking shot. Finest man there, just a single of the first ball. Ismail has to face the remaining balls here. Is he going to look for one here? Is he going to look for double? Or will he make the ball fly? In desperate need of boundary. 1 or 2, much needed here. What will he do? Has he got that ability? Is he going to use that extension of arms? Will he make the ball go away? And that was in the arc, that was in the zone. Could only manage it down to the square for a single. 68 from 34 balls. 2 good deliveries to me. As he chipped in with just singles there. He keeping the batters under check and just conceding single and single. So what he's going to do with this one? Will batter mingle it with a big shot here? Or it will be Bilal Pandya who's going to chip in with something special here. Will he come up with a wicket? Goes and bows, and that's a good looking shot. Square driven in front of square on the off. Just a single again. Singles won't do it for Global Dadoo Titans. They need a big boundary here. One big shot is what they require. Bilal is keeping it simple. 3 singles on 3 balls. Bilal. And it's all about Bilal right now. As Robbie has convinced
captain colored. Bilal has to step up now. He has to prove his mettle. Tell his captain that I can ball and I can keep things tight. That's Ismail in danger there. That's Ariel and Apish. He dropped. He's dropped at long off. Should have been taken. What you have done, man. He's put down by fielder. Unable to hold the no. Catch gone down. Important catch gone down. Bilal nearly had him there as the ball popped out. And he misjudged that one. Look at his response. Well, he wasn't damn sure. He wasn't looking positive on that occasion. And in the end, it gone down. A chance for Ismail. He's got the lifeline. Will he cash on? Is he going to fire this one? 5 runs coming. 4 balls. That one hit hard, straight. Drill down the ground. There is the Salmon. He conceded brace here again. Can't prevent that second run. So back for the second again. Back for the double again. 63 to get from 31. And this over 3 singles and 2 doubles. Makes it 7 of 5 balls here. 1 big shot, 1 boundary or a 6 will make it 11 or 13. What will he do? Where is this one going? Oh, it just passed to the stumps. Just over the stumps there. He's lucky. Missed by a whisker again. Wasn't that far from stumps. Bilal don't know. Nobody knows how did that miss the stumps. But he's lucky to survive. It's overdone. Tight over from Bilal. Just 7 off it. Good over this in the end. It was a kind of a reverse moment in the end of the surface. That marks the completion of over number 15. 5 overs. And it's gone up to now 12.16. It was 11.67 when Bilal started his over. At the end of his over, it's now 12.60 and over. अच्छा ओवर का था 7 रन आए ओवर से 30 के तो से 63 रन चाहिए इस्माइल 27 दरदिश 44 पर ये पार्टनरशिप बहुत बढ़िया परिणाम आपके हित में आए ना आए पर बल्लेबाजी बेहतर की है पर यहां से समाप्त करवाना ये आपका दायित्व है और इस दायित्व को निभाना होगा इन 2 बल्लेबाजों को क्या दरदिश यहां से इस्माइल के साथ मिलकर इन 30 गेंदों से 63 रन बना पाएंगे और ग्लोबल डडू की जीत में ये योगदान होगा ये देखने वाली बात 30 गेंदें 63 की आवश्यकता 15 के बाद 129 पे 5 जीडी टाइटंस ग्लोबल डडू टाइटंस 192 चेज कर रही है 12.60 इस समय रिक्वायर्ड रन रेट और 8.60 करंट रन रेट उस छोर से अब देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया गया है इस्माइल मोहतशम 27 दरदिश गोनी 44 JK Super Cement Red Premier League 2025 second edition presented by Athwas Retail. Athwas with the confidence. 15वां मुकाबला दूसरी पारी ग्लोबल डडू टाइटंस की टीम 192 चाहिए जीत के लिए 129 बना लिए हैं 5 विकेट पे 15 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 5 ओवर आने बाकी इस दूसरी पारी में और 5 ओवर में 63 जीत के लिए नेवर की शुरुआत हर्ष का इस्तेमाल गेंदबाजी में पहली गेंद पर यह बड़ा स्ट्रोक खूबसूरत सीधे स्टैंड्स में पहली गेंद पर स्वागत छक्के से यहां हर्ष यादव का अरे इस प्रकार से अगर जिक्र करें ग्लोबल डडू टाइटंस की टीम कोशिश में जरूर क्योंकि 30 गेंदों से 63 और पहली गेंद पर छक्का 135 रन संख्या 59 चाहिए 29 गेंदों से अगली गेंद लेकर के इस बार ऑफ साइड में एक बार पैर खूबसूरती के साथ इनसाइड आउट बहुत ही बेहतरीन ये दूसरा छक्का कमाल की बल्लेबाजी इस बल्लेबाज द्वारा और दरदिश गोनी ने आज ये प्लेज लिया है कि अब इस मुकाबले को समाप्त करके ही यहां से लौटना है और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी 2 गेंदों से 2 छक्के रन संख्या में वृद्धि हर्ष यादव के विरुद्ध 2 छक्के और बेहतरीन शानदार ताकत नजाकत ऊर्जा का संचार ओह एक दर्शक ने समझते ये कैच लपका है 51 चाहिए 28 गेंदों से 141 पे 5 और दरदिश के
50 रन भी पूरे होते हुए 2 छक्कों से 56 पे नाबाद 38 गेंदों से बेहतरीन पारी ऐसे समय में जबकि टीम को आवश्यकता थी। 38 से 56, 141 पे 5, 15.2, 51 चाहिए 28 गेंदों से। ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार। ये तीसरी गेंद इस ओवर की। इस बार ऑप्शन से थोड़ा बाहर थे, हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में खेले। रन संख्या में वहां दोनों बल्लेबाज हालांकि वृद्धि करना चाहते थे और वो हुई भी 1 रन। और 3 गेंदों से 13 रन अब तक आ चुके हैं और 15.3 के बाद 142 पे 5, 50 चाहिए 27 गेंदों से। ये बड़ा ओवर और इसको और बड़ा करना होगा। वो तलाश रहे थे एक बड़े ओवर को और वो ओवर हर्ष यादव का। फिलहाल 3 गेंदों से 13 रन, ये कमाल का स्ट्रोक था। ये पहला छक्का और फिर ऑफ साइड में वो दूसरा, ये दूसरा, ये एक और खूबसूरत। और 2 गेंदों से 2 छक्के, फिर एक सिंगल। 3 से 13 आ चुके हैं और मैं चौथी गेंद लेकर के हर्ष ऑप्शन से बाहर और अपनी जगह खड़े खड़े उस गेंद तक पहुंचना चाहते थे, थोड़ा ऑप्शन से बाहर थी, ऐसे में नहीं पहुंच पाए। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। डॉट के साथ संतोष। 4 से 13 आए हैं। 15.4 के बाद 142 में 5, 50 चाहिए 26 गेंदों से। ग्लोबल डडू टाइटंस को अलसमत क्रिकेट क्लब के विरुद्ध यह मुकाबला जीतने के लिए पहली जीत होगी ग्लोबल डडू टाइटंस की इस टूर्नामेंट में, अगर इस जीत को अर्जित कर लेते हैं। और वहीं पे 2 मुकाबले अलसमत ने खेले, एक में जीत एक में हार, ये तीसरा मुकाबला। और ऐसे में 26 गेंदें 50 रनों की आवश्यकता। हर्ष यादव, ये उनका तीसरा ओवर, 32 रन खर्चे 2.4 ओवर में। एक और गेंद लेकर के तैयार। सामने इस्माइल मोहतशम। इस्माइल के लिए गेंद ऑन साइड में। 1 रन दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज, केवल 1 से ही संतुष्ट रहेंगे। 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ 143 पे 5, 15.5, 25 गेंदें 49 रन। ये है इक्वेशन, ये है आंकड़ा इस मैच में ग्लोबल डडू टाइटंस के लिए अलसमत क्रिकेट क्लब के विरुद्ध। ये 15वां मुकाबला इस टूर्नामेंट का, दूसरी पारी, एक संघर्षपूर्ण मुकाबला और निश्चित तौर पर एक रोमांचक स्थिति आने वाली है इस मैच में। 25 से 49, दर्दी 57 पे सामने। इस्माइल ने 28 बनाए। आखिरी गेंद हर्ष की, इस बार हल्के हाथों के साथ गैप में खेला है पर उस ओर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन पूरा किया और केवल 1 से ही संतुष्ट रहेंगे। अंतिम गेंद पर 1 रन और कुल मिलाकर ओवर से आए 15, 24 गेंदों से 48 चाहिए 144 पे 5, 16 समाप्त। Messy over this from Harsh Yadav, and that was needed. That was the need up and up for Dardish Goni. He has to unleash. He done that in style. 2 quality shots. The second 6, that was majestic. That was mind-blowing. And the swashbuckling knock continues in the middle. Batting with a straight 145. He has used 40 balls for his 58, 3 boundaries and 3 sixes, 3 fours and 3 sixes. And it's each. He draws a leveler there. 144 on the board. 48 needed from 24 balls. Bilal is given the ball again. His first over, that was tight. Just 7 from that. 48 to get. 24 balls. Exciting chases on Cardos. Is Dardish going to be the man to take their side over the line? Will he be able to do that? 48 needed. 4 overs are going to come. We're going to be into the 17th over. Bilal will feel little amount of pressure as of now. As Dardish, he has got 58 of 40 balls. He's on song here. He is going to be the man of the night. 48 needed from 24 balls. 12 and over is the asking rate. First ball of fresh over. Dardish comes down the track, punched hard. Oh, there is a fumble. We'll get 4 for that. Down to 44 of 23. 23 से अब जाकर के 44 की आवश्यकता। पहली गेंद पर चौका, हल्का सा फंबल और 4 अर्जित किया वहां पर बल्लेबाजों ने। आवश्यकता भी है यहां रनों के जीडी टाइटंस को। बिलाल पांड्या का दूसरा ओवर, पहले ओवर में आए 7। इस ओवर की पहली गेंद पर चौका, ये फंबल हुआ और चौका बटोर लिया और निश्चित तौर पे निराश जरूर हो गए कप्तान और गेंदबाज बिलाल पांड्या भी। फिलहाल अगली गेंद लेकर के तैयार। 23 से 44 की आवश्यकता। 16.1 के बाद 148 में 5। अगली गेंद पांड्या की, इस बार तिरछे बल्ले के साथ इसको गाइड किया। पीछे गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए एक और चौका। 2 से 2 चौके, 2 गेंदों पे 2 चौके, 8 आगे 2 गेंदों से और अब 22 गेंदों से 40 की आवश्यकता।
14-8, 2 boundaries coming. Another fumble there, and Bilal. There is no problem with Bilal. Look at the field, but that was guided nicely. That was artistic one from Dardish Goni. Dardish looks like the man of the night. Is he gonna take his side over the line? He has that caliber. He has that capacity, ability. He has to draw that pattern tonight. 14-8 from 22. Bilal will be under pump. 2 balls, 2 boundaries. Third one. Oh, he's lucky to survive. Gets away with that one. Wasn't that from off pole? And Bilal is bit unlucky. And the batter is luckier and the luckiest than Bilal here. Dardish on to 66 of 43. Now 14 needed from 21. Luckily, he gets a dot in between. He chipped in with a dot delivery on that occasion when he needed that dot ball to be back on track for a while. Bilal bit unlucky in this over. First boundary conceded by the man at extra cover. The second one, it gone through that gully area down to the third man. 40 from 21. Ball number 4. That is guided again. There is a fielder. Mohit Kanodia won't miss this time. Just a single. 39 from 20. 20 गेंदों से अब जाकर के 39 रनों की आवश्यकता। इस्माइल और दर्दिश ने बेहतरीन साझेदारी निभाई और न सिर्फ साझेदारी बल्कि इस पारी को सजाया संवारा और इस परिस्थिति में ला खड़ा कर दिया है जहां पे एक रोमांचक स्थिति इस मैच में बनी हुई है। 39 रनों की आवश्यकता, 20 गेंदों का आना बाकी। 2 गेंदें इस ओवर में। बिलाल पांड्या का दूसरा ओवर, 16 रन अभी तक खर्चे 1.4 ओवर में, पर पारी कमाल की। इस्माइल 28-20 गेंदों से एक स्तंभ की तरह खड़े और दूसरे छोर से दर्दिश ने 67 रनों की ये बेहतरीन पारी के लिए ऐसे समय में जबकि जीटी टाइटंस को आवश्यकता थी 44 गेंदों से 67, 153 पे 5, 39 चाहिए 20 गेंदों से। अगली गेंद लेकर के बिलाल, सामने इस्माइल। एक और डॉट, दबाव होगा इस समय बल्लेबाज पे। 19 से 39 रनों की आवश्यकता। Another precious dot from Bilal. It's down to 19. 39 to get from 19 balls. Ismail on strike. Dardish telling Ismail, take it easy. We can still prevail in this one. It's exciting game. It's mouth-watering underway. Will it go down to the wire? What a game of cricket. Who would have thought that? They will be back into this one like this. The one man who stood tall and his ground in today's game. It's Dardish. The next one, Ismail. Shuffle across. Would have been a blind there, but he parried it to mid-off area. And the two batters looking for the second one will get with ease. They need 37 from 18 balls. Would have been absolute blind. It would have been a good reflex catch, but he's unable to hold on. Bilal has hurt himself for a while. He has conceded 18 of his tours in the end. This one, it is expensive. 11 from this one, the 7 from other one. Overall, he's gone for 18. Look at that shot again. And he's having some problem with that one. When there is on the rise delivery, when it is climbing a bit, he's going with that horizontal blade. And there is a kind of problem. He's unable to cope up with that kind of a line and length. So there is a brace coming. They're 37 behind from 18. What do you make of it? I think intriguing chase underway. You can't say until the last ball is now bowled. They need 37 from 18. What a game. Evenly poised one with 5 wickets in hand. They can take chances, but this lad need to stay his ground till the very last moment. On the other side, Al Samad in a hurdle. Al Samad is in a hurdle. It's a nervy moment, nervousness on that portion. Tensed moments in their hurdle. Who's gonna bowl? They have 3 overs, 37 to defend. Who will bowl the over number 18? 17 समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर का खेल बचा है यहाँ और ऐसे में किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। 18 से 37 बिलाल पांड्या ने 2 में 18, पहले ओवर में 7, दूसरे में 11। मोहित कनौजिया का इस्तेमाल 18वें ओवर में 155, 17 के बाद 5 विकेट पे 12.33 प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। इस्माइल ने 30, दर्दिश ने 67, 37 चाहिए आखिरी 3 ओवर्स में। 18 गेंदे 37 की आवश्यकता। मोहित कनौजिया, सुनील कुमार, उनके पास कुछ बातचीत उनसे हुई और अब जाकर के तैयार। और सामने दर्दिश गोनी, एक बेहतरीन और शानदार बल्लेबाजी, सेट बैटर, बहुत ही बेहतरीन योगदान। पर किस प्रकार से इस मैच को अपनी टीम के लिए फिनिश कर पाते ये देखना होगा। पर एक कड़ी चुनौती जरूर है, एक संघर्ष, एक कांटे की टक्कर का ये मुकाबला इस समय चल रहा है वर्तमान में। 18 गेंदे 37 की आवश्यकता। सामने दर्दिश, हालांकि फील्ड प्लेस में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है ये देखते हुए कि बड़े स्ट्रोक से बचा जाए। फिलहाल कनौजिया पहली गेंद लेकर के 18 गेंदे 37 की आवश्यकता और सामने दर्दिश। हालांकि इस्माइल मोहतशम नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे हैं और यहाँ थोड़ा सा विलंब होगा खेल में
क्योंकि एक जो लाइट टावर है वो उसकी रोशनी चली गई है और निश्चित तौर पे और अब जाकर के थोड़ा सा विलंब जरूर होगा इस मैच में। 18 गेंदों से 37, 18 गेंदें 37 की आवश्यकता और अब तैयार दर्दिश सामना करने के लिए 67 पे 37 है ये 18 गेंदों से। और विलंबता अभी भी इस मैच में क्योंकि वो एक लाइट टावर जो ऑफ हुआ है उसके चलते थोड़ा सा विलंब। पर ये मुकाबला काफी संघर्षपूर्ण क्योंकि 18 गेंदों से 37 आपके पास आने वाले बल्लेबाजों की अगर हम बात करें तो जीडी टाइटंस के पास अब आदिल दादा हैं और उसके अलावा गौहर रशीद भी आपके पास है, वो अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो बल्लेबाजी में विकल्प है आपके पास। पर ये एक चुनौतीपूर्वक स्थिति, यहाँ पे मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा ये थोड़ा कल्पना करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल और आखिरी गेंद जब तक न फेंकी जाए आप अनुमान नहीं लगा सकते। ये महान अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ सभी प्रोडिक्शन फेल है, ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है। 3 ओवर में 37, यह है इक्वेशन, यह है आंकड़ा। पर कुल मिलाकर बेहतरीन क्रिकेट खेला आज ग्लोबल डाडू टाइटंस ने। हालांकि पहली पारी में अल समद ने भी और बेहतर शुरुआत दी, मध्य क्रम में कुछ विकेट जरूर गंवाए, फिर अंत में बेहतर तरीके से उस पारी को फिनिश किया 191 तक 20 ओवर में 192 का न्योता रखा। 17 में 155 5 विकेट पे धरतीश और इस्माइल मोहतशम जिस समय बीच मैदान में नाबाद। और अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है, वो जो लाइट टावर है वो ऑफ हो चुका है और ऐसे में अभी भी थोड़ा सा इंतजार किया जाएगा दोबारा से वो ऑन हो और मुकाबला रिज्यूम हो उस क्षेत्र में। 155 पे 5 17 के बाद 18 गेंदें 37 की आवश्यकता। 37 behind. One of the lights have gone off all of a sudden. Dardish straight away asked the on-field umpire that I can't carry on and continue. I need proper lighting. I need proper light. 37 behind from 18 balls. 155 for 5. JK Super Seamen, Red Premier League Season 2, Day 9, Match number 15. JK Super Seamen, Red Premier League, presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. Banai Mazboot Kashmir, 37 behind from 18 balls. I still remember that game against United Imports. They conceded defeat in the Super over then. It was their game to win and it was their game to lose, and they lost the game in the end. They needed 8 of the final over. Take a look again, and Dardish Goni, and these are the things going on at the moment. United Imports played 4, won 3, lost 1. They have 6 points under their belt. Hillview played 4, won 2. They lost 2 games. They have 4 points. Take a look, and this is the light tower which gone off. 37 behind from 18. It's darker over there, and this is the picture on your screen. Go through this one again. This is the latest one from that portion. Oh, come on, switch it on, bring it on. 37 to get from 18. 155 for 5. 192 is the time. We were talking about that, losing that game. They needed just 8 from that over, and there were a couple of dot deliveries that cost them heavily in the end. And they leveled that score on the final ball thanks to the likes of Gabbar Rashid. But Gabbar Rashid conceded those 14 in the super over on 3 straight deliveries. And those quality sixes of the bat of Khalid Butt, they were quality shots. And everyone praised it. And there were a lot of compliments coming in and flowing in for Khalid Butt. And people were talking about in detail that that's why he's known as Mr. 360 in the Valley. But right now we have a great game of cricket underway. A game which is full of excitement, where you are unable to guess which way the game is gonna go. It has turned, it's tied couple of times in today's game. We have seen that. In inning number 1, we have seen that on couple of occasions, game going from one end to the other end. And it was just like that, vice versa going on. First it was batters. They dominated. And in the middle, those bowlers bringing things back on track at the fag. And again, batters gone ruthless and flawless, reckless with the bat. Scoring runs, finishing around 191, giving 192 to chase. In response, likewise, we have seen that things going from bad to worse.
And then from good to better and best, we have seen improvement, we have seen uppers, we have seen downs, ebbs and flows. The excitement we have seen today and keeping the crowd on edge of their seats. They are still there. They're waiting for the outcome. They don't want to leave. They're still there. You can see that they're on edge of their seats. Some of them on their toes, watching the game. They want that light tower in place, functioning properly. Take me through again. Let me take you through. Sultan Warriors played 3, won just a game and lost 2. They are 2 points, but their net run rate is still better than Spectrum Kings, who lost 4 on the trot. They are minus 3.695. Royal Goodwill Athwas, Sopor Stallion and Sultan Warriors, they're almost through for the next round of the tournament. United Imports Hillview, Real Sultan Summerbook played 2-1-1. And Al Samad Cricket Club, they played 2. They have 1 win and 1 loss. Oh, they have minus 1.400. The net run rate. Global Dadoo Titans, look, it's in minus 0.426. And their ship is sinking. Who knows? It might capsize at any time. Yeah, of course, they lost the game to Hillview Rajouri. Otherwise, Rajouri would have been in tight situation in the tournament. But that victory over United Imports kept their boat afloat. But look at their net run rate. It's also minus 0.955. So that means they are still under the pump. If Global Dadoo Titans win this one, if they prevail in today's game, that will make it interesting. And that will make it the group of death. Let me take you through the top performers of the tournament. The orange cap holder, Sahil Shafi, was scored 215 runs and picking 7 wickets. The most valuable player of the tournament because he has scored number of runs 215 and he has picked up 7 wickets. Am I right? He's going to be the top contender on top. When it comes to that leaderboard, he's going to be on top with that orange cap. 37 needed from 18 balls. And this is the picture, the latest one on the screen. Short pause in play. The work is going on. The technical team is there to work on it. Current rate is 9.12. The required rate is 12.33 and over. Stats which we shared with you guys earlier on. We're expecting they will be back on screen. Then Banu Pani IT's 3 matches, 146 runs, highest of 75. Sahil has got 100 of 106. Tajamul Baba, the third one, 125. Nasir Kumar, the fourth one, with 125. Baba has got 2 games to go. Nasir Bashir Kumar has got 1 game to go. Wasim Kasur with 1 game to go, 113. Highest of 48. Zishan Ali, 4 games, 112. Yabar Hassan, 3 games, 104. Puneet Kumar, 3 games, 94. Zamin Ashik, 4 games, 89. And Gaurav Chaudhary, 3 games and 88. Yash Garg, 3 innings, 14 wickets. 2 madness, averaging 3.64. Oh, look at that. Maximum number of wickets in a game, 6. Economy 4.25. And he's one of the top contenders in the bowling department. Rob Bashir, the second one, with a game to go, has picked up 10 wickets. Averaging 10. Maximum wickets in an innings, 4. 9.52 is the economy. Sahil has picked up 9 wickets. Not 7, he has picked up 9 wickets. Wow. And then Abid Mushtaq, 2 games with 7 wickets. Faizullah Dar, 4 matches with 7 wickets. And these are the Suryan Chirena matches 4. Catches 1, caught and bowled, and caught behind 1. And a run out, it is 1. Assistance, no. He hasn't assisted in any case. Then dismissal is 1. Wahid Tele, matches 3. Catches, nothing there. Caught and bowled, nothing there. Caught and behind. And look at this. 36 fours, I think. Overall boundaries in the tournament, 364. And number of 6, 197. And Sahil, he has 23 boundaries. Tajamul Baba has 10 sixes. And Nasir Kumar,
He has got 10 sixes. Banu Pane has got 8 sixes. Amin 8. Wasim 7. Zishan Ali 13 boundaries. Tajammul 12 fours. Banu Pane 12 fours. And Nasir Bashir Kumar 11 boundaries, 11 fours. And these are the stats coming your way. And Al Samad Cricket Club, the next pictures, line it up for tomorrow. It's going to be the Real Sultan Summerbrook. Then Sopor Stallions will meet Royal Goodwill tomorrow evening. It's going to be the night game. It's going to be the under lights. And tomorrow is going to be 2 games. Then on 21st of September, there is going to be again a double header. Am I right? And then on 22nd of September, there is going to be just a game. It's going to Sultan versus Baramulla taking on Sopor Stallions. Oh, that's going to be another big game of cricket coming your way. So these are the fixtures coming your way. So stay tuned, stay connected, stay glued to JK Sports Time and JK Sports Time YouTube and Red FM JK for these exciting games. We'll line it up for you guys. Hope you're enjoying the coverage. You're showing that excitement. We know that you're delighted and you're on your toes and loving the game of cricket. It's a festive time here at Srinagar City, as it is Red Premier League Season 2. The title partner JK Super Cement and presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. Tournament boundaries were 364 and 197 sixes. The highest number of sixes hit by a batter, it is Tajammul Baba, the sixer king. Once again has proved himself right with hitting majority number of sixes, 10 under his belt against his name. 37 behind from 18. As it's prolonging. It's prolonging. It's going to take time. It's going to take match referees there. And Balvendra Kumar and Ravi Kumar Chaurasia. And now the match referee is going to join them in the middle. Look, that one. It was flying. And captain ended up as a mute spectator.
Back again. Finally, a light is on, and that tower is working properly now. There was a kind of a technical snag in it. Now it's fixed. We're done with that. 37 needed from 18. Dardish 67 on strike. Kanoja has got the ball in his hand. His ball 3. Prior to this, 1 for 25. 155 for 5. First ball of fresh over. Reversing his stance. He's going to get 4 more here. 33 needed from 17 balls. What a start. 17 गेंदों से 33 की आवश्यकता और विलंबता के बाद दोबारा से खेल शुरू होता है। हालांकि वो लाइट ओवर जो ऑटोमेटिकली ऑफ हो चुका था दोबारा से अब वो ऑन कर दिया गया है और अब जाकर के मुकाबला दोबारा रिज्यूम होता हुआ। पहली गेंद पर चौका। 17 से 33 ग्लोबल डाडू टाइटंस की टीम को 159 पे 5। 17.1 दर्दिश 71। 45 गेंदों से यादगार पारी, ऐतिहासिक पारी यदि यहां से जीत अर्जित कर पाती है ग्लोबल डाडूज की टीम। 17 गेंदों से 33 की आवश्यकता। मोहित कनौजिया आखिरी ओवर। कनौजिया 3.1 ओवर में 29। यहां खूबसूरती के साथ खेला, जरूर 1 रन पूरा किया, पलट कर तेजी के साथ दूसरा रन के लिए और यहां दूसरा रन भी पूरा कर लिया। 2 और खाते में 16 गेंदों से 31 चाहिए। A brace here means 31 to get. It's reduced to 31 from 16. 6 runs coming up, 2 balls here. 31 from 16 balls. 11.63 is the asking rate. Dardish on strike. Pressure mounting, counting on both ends. It's a nervy moment. The side which will help the nerve goes for the reverse sweep again. Connectors. There is a fumble, but just one. There is a man backing up who is there to cover it up. No damage. 13 needed from 15. 12 and over is the asking rate again. 15 गेंदों से 30 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले में और 3 गेंदों से अभी तक 7 रन आ चुके हैं। 15 गेंदें 30 की आवश्यकता। इस्माइल 30 पे और दर्दिश गोनी ने 74 रनों की पारी के लिए 47 गेंदों से। बहुत ही बेहतरीन ये मुकाबला। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस दिखा है बल्लेबाजों में, खासकर दर्दिश गोनी। आत्मविश्वास दिखाया आज। बेहतरीन पारी खेल रहे हैं, शानदार पारी खेल रहे हैं जीडी टाइटंस के लिए। ग्लोबल डाडू टाइटंस 162 पे 5। 30 चाहिए 15 गेंदों से। इस बार डाउन द ट्रैक निकले, ऑन साइड में खेले खूबसूरती के साथ। पीछे फील्डर सिंगल मिल जाएगा। 1 रन और खाते में। 14 गेंदें 29 रनों की आवश्यकता और यहाँ दूसरा रन भी पूरा कर रहे हैं। या 1 ही रन होना चाहिए था। हल्का सा फंबल और तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया। 14 गेंदों से अब जाकर के 28 रनों की आवश्यकता इस मैच में। And it is a brace on that occasion. Good running between the wickets. 28 from 14. 12 and over is the asking rate. Mohit Kanoja to continue. That's a hard hit. There is a man in the deep. He's going to cut it off. He does that. 27 needed from 13. What a match. Who would have thought that? This isn't over yet. The chase is pretty on. 13 गेंदें 27 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। पैट पे टकराई अपील और उंगली आसमान की तरफ। यहां पर अंपायर रवि कुमार चौरसिया के 165 पे 6 ओवर की हो गई समाप्ति। 12 गेंदों से 27 चाहिए मैच जीतने के लिए। It's a huge striker. Mohit Kanoja has brought Ultimate seriously back into this one. It's a big fish. Huge achievement. Look at that one. Pretty plumb right in front. There was no doubt. And Ravi Kumar Chaurasia. Oh, look at the celebration from Mohit Kanoja. He has his man. Once again, Dardish left his side in a kind of bother again. Unable to finish the game. It is the second occasion in the tournament. It's second time round. He's unable to finish the game for his team. Keeping their hopes alive. Batted with a strike of 154. 3 sixes and 6 boundaries. 6 fours. But unable to finish the game. It's down to 2 overs and 27 needed. And there comes the Gawar Rashid. The man who kept their hopes alive. Taking it to the Super over the day. It's a different game today. Look at their dugout. Oh, you can see that. A little grim. Little sadness. Agony for the teammates over there. They can feel that. An ecstatic Mohit Kanoja and rest of the pack.
as they are seriously back into this one. 27 needed from 12 balls. 27, 12 balls. Who will win? Can Gabbar Rashid do something with the bat? Are we in for another heroic of a knock? Is he going to wreak havoc with the bat? What can he do? Is he going to bring it on? Are we in for another crackerjack of a show with the bat? What can Shahid Khan do? He has picked up 3 earlier on. He has done the job with new ball in his hand. Now he's got the old one in his hand. What can he do? 12 balls, 27 to get. 165 for 6. As of now, Shahid Khan will finish his quota here. He's in his final over. Ismail and Gabbar Rashid in the middle. Ismail, he has got his eyes in. He's a well-settled batter in the middle. Gabbar joins him in the middle. Can they take their side over the line? What will happen? Suspense continues in the middle. Pressure on both ends. It's a nervy moment, no doubt about that. You need nerves of steel to continue. 12 balls, 27 to get. Fresh over first ball. Ismail guided it down to the third man. Are they going to look for the 2? There is a fumble from Mohit Kanoja and they're back for the second. I was just talking about they're going to push for the second. They did in the end. Little fumble there by Mohit Kanoja before he could return and turn around. Before he could recover and turn around. 2 more runs added on. They need 25 from 11 balls. First ball brace. And excitement isn't over yet. And it is still the game on, chase on. It's pretty on at the moment. We can't say anything. The game is changing its colors. It's turning the tide from one end to the other end. Pendulum is swinging. And once again, after that fall of wicket, it looks like that Samath is back into this one. 25 from 11. Bangered in short, but that one didn't rise. Hitting the deckhard, I thought it will rise. Even batter thought that. Not what he intended. It capped low in the end and goes past into the safe hands. 25 from 10. 10 गेंदों से 25 167 पे 6 18.2 जीडी टाइटंस ग्लोबल डडो टाइटंस बनाम अल समद क्रिकेट क्लब 15वां मुकाबला जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल अथवास विद कॉन्फिडेंस 18.2 25 चाहिए 10 गेंदों से यह सिंगल मिलेगा 1 रन और 1 रन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है 9 गेंदों से 24 चाहिए इस मैच में शाहिद खान का यह आखिरी ओवर है और अब तक उन्होंने 26 रन खर्चे हैं शाहिद खान अच्छी गेंदबाजी की है 3 विकेट उन्होंने प्राप्त किए हैं और यहाँ पर भी अच्छी गेंदबाजी की है इस ओवर में अगर जिक्र किया जाए बहुत ही बेहतरीन शानदार ये मुकाबला इस प्रतियोगिता का 9 गेंदों से 24 की आवश्यकता 168 पे 6 और गब्बर रशीद और पिछले मुकाबले में और बेहतरीन पारी एक ठोस और आकर्षक प्रहार किए थे गेंदबाजी में बल्लेबाजी में पर अंततः वो मुकाबला सुपर ओवर में हारी थी जीडी टाइटंस यूनाइटेड इंपोर्ट्स के बाद जहाँ खालिद भट्ट ने पहली 3 गेंदों पर वो 3 बड़े स्ट्रोक 2 छक्के 1 चौका अर्जित करके मुकाबला अपने नाम कर लिया था 9 से 24 ये इक्वेशन 18.3 168 6 विकेट पे आखिरी 9 गेंदों का आना बाकी गब्बर रशीद 0 पे इस्माइल मोहतशम 36 पे और 27 गेंदों से 36 ये है मुकाबला यह है इक्वेशन 9 गेंदों से 24 की आवश्यकता इस मैच में एक बेहतरीन और शानदार मुकाबला एक आकर्षक मुकाबला और थोड़ा सा विलंब अभी भी मुकाबले में किस गेंदबाज का चयन इसके बाद किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी क्योंकि वो आखिरी ओवर होगा और आखिरी ओवर किस गेंदबाज से गेंदबाजी कराई जाएगी ये देखने वाली बात होगी 168 पे 6 18.3 9 गेंदें 24 की आवश्यकता मैच जीतने के लिए टीम ग्लोबल डडो टाइटंस को अल समद क्रिकेट क्लब के विरुद्ध तीसरा मुकाबला अल समद का और वहीं पे ग्लोबल डडो टाइटंस का भी तीसरा मुकाबला 24 की आवश्यकता यहाँ हवा में गेंद देखना होगा गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ 172 6 विकेट पे 8 से अब जाकर के 20 रनों की आवश्यकता It flies over the infield down to the third man boundary for 4. That was a rising one. It did rise around that chest high, around that rib cage area. He makes little room and goes after it without any fear and gets 4 for that. The hard work paid off. Fortune favors the brave. 20 needed from 8. The next one gone flat. Where is this one going? That's gone all the way for 6.
Would you believe what's going on? Gawar Rashid once again. Is he gonna lit up the Sante? He did that once again here. He lit up. He lights up Bakshi Stadium. Gone flat. Cut comes into play over backward, a point for a 6. The other day they were just needed 8. And they were unable to finish the game today. They are 14 behind from 7 balls. Ball number 4 and 5 yielded 10. 4 and a 6 overall. 11, 13 of 5 balls. Big over this. The last ball, if he makes it fly all the way, that's going to make it one massive over. That will simply change the complexion of the game. Is he going to do that? Is he going to look for one here? Will he keep the strike? What is he going to do now? 40 needed from 7 balls. Look at the bowler. He's feeling that certain amount of heat and pressure right now. He's under the pump. Mid off up inside. No man at long off. There is a long on in place. 40 needed. 7 balls. Once again, the last one from Shahid. That one gone flat. Into the extra cover boundary for 4. It's wide of mid-off boundary for 4. That means they need 10 from 6 balls. Other day they needed 8 from 6 balls. Today they need 10. What do you think? What do you think, dear Nazir? I believe that this one is going to keep the beloved listeners and viewers on edge of their seats. Nobody's going to move, and why they? Because this game is still hanging in balance. Just 10 needed from 6 balls. Big over this. Makes it one massive, one big, huge over this. Plenty of it. And that is keeping Global Dadoo Titans in the chase. They need just 10 from the last over. Who's going to bowl that final over? Bilal Pandya? It looks like that. Pandya has got the ball. Is it going to be Bilal Pandya? Pandya says, take it easy. Let me take the charge. I'm going to deliver it. And on the other side, you can see that there is a pressure. There is a suspense. Tense moments there. Pep talk is going on. Conversation is going on. Discussion is going on. What to do? I think Gawar is telling him, just hand me strike. Let me take the charge. I will deliver my level best. Pressure on both ends. Nervousness in the middle. High octane. Gone down to the wire. Who would have thought that? Absolute nail biter. 6 balls. 10 to get. He's marking the fresh guard and is getting ready. 10 balls. 6 balls, 10 needed. आखिरी ओवर 10 रनों की आवश्यकता ग्लोबल डैडू टाइटंस को अलसमत क्रिकेट क्लब के विरुद्ध इस्माइल और गौहर रशीद बीच मैदान में पर गौहर ने पिछले ओवर में वो आक्रमण किया, वो प्रहार किया। 10 चाहिए पहली गेंद लेकर के बिलाल पांड्या। धीमी गति की गेंद जकमा दिया यहाँ पर डॉट के साथ। यहाँ पर शुरुआती इस ओवर की 5 गेंदें 10 रनों की आवश्यकता। First ball dot slower comes into play from Bilal Pandya. He's keeping his side alive in the competition. What he's going to do on ball number 2. The first one, it was a slower one. He can't go with a slower again. Batter will be ready for that. What he's going to do, is he going to persist? And batter need to resist on the other side. 10 to get, 5 balls. Ball number 2. Where is this one going? Ismail under the pump. That's up in the air. Who's going to take this? Is it in the gap? That's landed onto the boundary cushion for 6. I can't believe. You can't believe. He's turned the tide like this, and Bilal is in disbelief as it landed on the boundary cushion on the full. That's gone all the way. I thought it's aerial, it's upish. It was indeed. But that gone the distance. It got the elevation and the distance. पहली डॉट, दूसरी पे छक्का और इस्माइल मोहतशम ने निश्चित तौर पे अब इस रनगति को मुख्तसर तो कर ही दिया और या दूसरा उठा दिया और गेंद स्टैंड्स में जा लगी है। और इस प्रकार से ग्लोबल डैडू टाइटंस अंततः वो जीत अर्जित करते हुए, जिसकी काफी समय से प्रतीक्षा थी। पिछले 2 मुकाबलों में वो कहानी उनके नाम आई नहीं थी, पर इस बार कहानी ने रंग लिखा, कहानी ने अंजाम लिखा। वो अंजाम परिणाम के रूप में पहली जीत अर्जित करते हुए अल समद क्रिकेट क्लब के विरुद्ध ग्लोबल डैडू टाइटंस 194 पे 6 मुकाबले को जीत लिया, पहली जीत अर्जित की। और गौहर रशीद के साथ साथ इस्माइल की अगर बात करें, क्या बेहतरीन पारी खेली इस खिलाड़ी ने।
4 विकेट से यह मुकाबला जीत लिया है ग्लोबल डैडू टाइटंस ने। यह जानकारी देते हुए मैं शेख नजीर साथी कमेंटेटर मनोवर तनवीर के साथ वापस जेके स्पोर्ट्स टाइम के स्टूडियो लिए चलता हूं, इस उम्मीद के साथ कल जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक दीजिएगा विदा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।